global arena. India at 75 has rediscovered its global voice, led by none other than global statesman, our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. While the rest of the world was forced to take sides over Russian invasion of Ukraine, India boldly stood its ground that exemplifies the new India. The new India now sits at the global hate table and drives its own narrative, which is fair and fearless. Yes, India adopted strategic neutrality by not siding with the West. Our External Affairs Minister, Sri S. Jaishankar, dispelled all notions of India's being apologetic about its ties with Russia when he recently said in Canberra that the West has no moral rights to preach us, as it had pumped weapons into India's neighborhood for decades. At the same time, India has expressed its support loud and clear for the narrative that global order is anchored on international law, the UN Charter, and respect for sovereignty of states. At the recent Shanghai Cooperation Organization gathering in Samarkand, Indian Prime Minister Narendra Modi told Russian President Vladimir Putin that now is not an era of war. It is thus not a surprise that India has earned respect from both the warring blocs, albeit grudgingly, throughout this troubled period. Even the Western press is now compelled to sing praise about India. Geopolitics aside, India has created a new global welfare economics paradigm. India steered clear of pumping cash into a vulnerable economy and avoided falling in debt trap that many global economies find themselves in today. Despite global headwinds, India is standing tall. As the world looms in recession, India continues to grow. As the Fed tightens monetary policy, the Indian rupee is still amongst the least depreciated currencies in the world. The IMF talks of India as a bright spot in view of our macroeconomic fundamentals being ahead of the curve. We will be the nation with largest youth demographic, offering an unrivaled dividend. Prime Minister Modi has set a developed nation target for India by 2047, the centenary of independence. The next 25 years will be India's quarter century. This is the mission statement for all Indian origin people, and believe me, we are a world unto ourselves. In conclusion, I would like to recall what Victor Hugo said many, many years ago. No power on earth can stop an idea whose time has come. India's time has come. Our time has come. Jai Hind, ladies and gentlemen. Thank you so much, Mr. Barun Das. તમારા પ્રેરક પ્રવચન માટે અને હવે કાર્યક્રમને વધુ આગળ ધપાવીશું. धन्यवाद. इसी बीच हमारे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीनाक्षी लेखी जी यहाँ पर बता रहे हैं. हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं. TV9 और आईना की ओर से मीनाक्षी जी आपका हम सहर्ष स्वागत करते हैं. आईना एक એવું નામ છે જેણે અમેરિકામાં, ભારતમાં અને અન્ય દેશોમાં પણ ગુજરાતીતા અને ગુજરાતી સંસ્કૃતિની વાતને મૂકી આપી. 2006, 8, 12, 15 અને 2018માં ચલો ગુજરાતનું આયોજન કર્યું. એની સાથે સાથે જ ડોમેસ્ટિક ઇન્ટરનેશનલ ઇવેન્ટ્સ પણ કરી અને ચલો ઇન્ડિયા એનું પણ આયોજન કર્યું. હવે પછી હું વિનંતી કરવા જઈ રહ્યો છું એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયન અમેરિકન્સ ઓફ નોર્થ અમેરિકા આઈના એના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સુનિલ નાયકને કે આ આખાએ પર્વ વિશે વાત કરવા માટે આપ મંચ પર પધારો. તાળીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ અને વિનંતી કરીએ શ્રી સુનિલ નાયકને આ ઉદ્ઘાટન પર્વે એમની વાત મૂકવા માટે. परम पूज्य श्री ब्रह्मविहारी स्वामी जी, पूज्य दाजी जी,
આદરણીય ગૃહપ્રધાન શ્રી સંઘવીજી, શ્રીમતી મીનાક્ષી લેખીજી, અન્ય ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, અત્રે પધારેલ આદરણીય મહેમાનો, ગુજરાતના જુદા જુદા ખૂણાઓમાંથી પધારેલ ગુજરાતવાસીઓ તથા ગુજરાત અને દેશભરથી પધારેલ, ગુજરાત અને દેશથી બહારથી પધારેલ ગુજરાત વંશીઓ, આપ સૌનું આઈના અને TV9 વતી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. With this program, when I came here, or back in America, when we organize Chalo Gujarat or Chalo India, people do ask us, why are you doing this? What is the motivation? Because of lack of time, I'll keep it short. The thing is, when you leave your home or when you leave your home country, you leave a little piece of your heart behind. And then you may forget about that piece altogether. Or you may let it grow inside of you as a small wound. The chronic pain of this wound gives birth to the organization. Most of the organizations like AINA are the re-establishments of the diaspora's lost villages, cities, and its culture. Now, diaspora is a word in the dictionaries only for a few decades. But immigration has been an important aspect of Gujaratis for centuries. And through all these immigration that has been happening for centuries, the end result is that now there are 35 lakh Gujaratis outside of India. This pool of people is extremely significant and an undisputed resource. And I'll give you a quick example. Do you know what is common between Gandhiji, Sardar Patel, Subhash Chandra Bose, Ambedkar, Vikram Sarabhai, and many more? Yes, they were all freedom fighters. But besides that, they were all part of a diaspora. I don't need to tell you about their contribution and how important of a resource, these stalwarts were. Friends, remittances and philanthropies have helped the families, the villages, cities, or to the country's economy. But I would still like to give you, I can keep, if I had time, I would have given you much more data. I would have given you a lot of figures of the remittances, and you've been hearing about it a lot. But right now, I'll just give you one example. હમણાં જે કોવિડ ગયો, એ કોવિડના સેકન્ડ વેવમાં ફક્ત એક મહિનામાં ડિપોઝિટ્સ જે ફોરેનથી અહીંયા આવે છે એમાં 6,000 કરોડનો વધારો થયો હતો ફક્ત એક મહિનામાં. This is all the money that was being sent by the diaspora to the families here. એ એક જ ક્વાર્ટરમાં 85,000 કરોડનો વધારો ડિપોઝિટ્સમાં થયો હતો, just to help people in India by the diaspora. That is just an example. As important a role that Gujarati diaspora has played in Gujarat, they have also taken Gujarat and Gujaratism to the world. I would be remiss not to mention the culture. Gujarati culture is a glue that binds our diaspora together. While the real power of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has shown the world what Gujarat or Gujarati is capable of. Garba, Ras, Gujarati cuisine, and now even our movies has helped in creating a unique identity of Gujaratis.
Even, our greetings are getting global. I am in hospitality industry and I develop hotels. When I go to my sites, when I greet my contractors with a good morning, they turn around and tell me "Kem cho?" When I meet my employees now, when I tell them "How are you?" they turn around and say "Jai Shri Krishna." So, the power of, soft power is something that's visible all over. Our culture has been setting records. Edison Ma, when we did the Chalo Gujarat for the first time, in the history of New Jersey, it was first time where the roads were blocked, where the local road was blocked, the two county roads were blocked, and even the state highway was blocked. 6 mile lambi laino, ava ek Gujarati culture कार्यक्रम में थाय, that has never happened in history of America before. So those are just some examples of how the diaspora is contributing in making our culture global. I know you will hear many other examples during the forum. Friends, engagement with diaspora is also a responsibility. One of the most significant areas of promoting the engaging the diaspora challenge is to prepare a young generation of Gujaratis by inculcating their interest in Indian culture and its development. One of the challenges that our kids have been facing is, they have to straddle between two polar cultures, two civilizations that are quite divergent from each other. In America, a young American of Indian roots stated, "We are considered too American by Indian standards and too Indian by American standards. Thus, we don't know if we belong to both the countries or we belong to none." They have been given a lot of derogatory, terms also. A decade back, they were ridiculed in USA as ABCDs, which stands for American Born Confused Desis. And in Britain, it was the BBBs, which stands for Born and Brought Up in Britain. The BBBs and the ABCDs are compared to a coconut, which is brown from outside, but behaviorally white inside. It is our responsibility to help them overcome these challenges and still keep them connected to our culture and our home country. The Indian government in last few years has taken the relationship with diaspora very seriously. Besides many other initiatives to mark the contribution of overseas Indian community towards the development of India, Indian government celebrates by organizing mega event, the Pravasi Gujarati Divas, on January 9th every year. The day commemorates the return of Mahatma Gandhi from South Africa to Mumbai on 9th January in the year 1915. Overall, the cocktail of government, religious organizations like BAPS, and diaspora in common has brought in great success. But while we have had our achievements, there is a lot that needs to be done. And thus, TV9 and INA took this initiative to organize Pravasi Gujarati Parv. This conference has brought together eminent diaspora personalities and associations involved in propagation of Gujarati culture and to discuss innovative ways of leveraging the diaspora to enhance Gujarat's soft power. The program for this forum is both deep and diverse. In fact, many of the panel discussions alone would be worthy of conferences in their own right. It is a parva to connect Gujaratis from outside of Gujarat and from outside of India. The base and the theme of the program is connect, communicate, contribute, and celebrate. It is self-explanatory and thus needs no explanation or elaboration. Friends, take advantage of meeting and discussing with the most successful people in their respective fields here. And we have them from all the aspects of life: spiritual, business, science, economics, politics, social service, films, dance, music, and much more. Your Excellencies, my brothers and sisters in the diaspora,
this is your home. Please take part in the discussions that are geared towards developing our state and to strengthen the diaspora. Let us mobilize our expertise, our resources, and our dedication to help our home state and together lay the foundations of the prosperity. Let us create a Gujarat where migration is a matter of choice and not a necessity. Thank you so much. આભાર નાયક સાહેબ. વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓને હૂંફ જો મળતી હોય તો ત્યાં સંગઠન દ્વારા મળે છે. ખૂબ સુંદર કામગીરી આઈનાની. ધન્યવાદ. અને હવે કાર્યક્રમમાં આગળ વધીએ. મહાનુભાવોને મંચ પર આવવા માટે સાદર નિમંત્રિત કરી રહ્યા છે. તેઓ મંચ પર પધારે ત્યારે આપણે આપણા ઉમળકાને તાળીઓમાં પરિવર્તિત કરી અને એમને આવકારીશું. સર્વપ્રથમ પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજીને સાદર વિનંતી કરીએ કે આપ મંચ પર બિરાજમાન થશો. પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજી. ત્યારબાદ બોલાવીશ સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર શ્રી કમલેશ પટેલ દાજીને. શ્રી રામચંદ્ર મિશન હાર્ટફુલનેસથી પ્રચલિત 150 દેશોમાં આધ્યાત્મનો ફેલાવો કમલેશભાઈ પટેલ કરી રહ્યા છે. એના પછીના ક્રમે પ્રેસિડેન્ટ આઈના શ્રી સુનિલ નાયકને મંચ પર આવવા માટે સાદર વિનંતી છે. શ્રી સુનિલ નાયક. આમંત્રિત કરીશ જેમની ફિલ્મ હમણાંથી ખૂબ ચર્ચામાં છે, છેલ્લો શો, જે નોમિનેટ થઈ છે ઓસ્કાર માટે, એવા ફિલ્મ મેકર શ્રી પાન નલિનને. એ પછીના ક્રમે સીઈઓ પેટ્રોકેમ યોગેશ મહેતાને સાદર વિનંતી કરીએ ટુ કમ આઉટ ટુ ધ સ્ટેજ. યોગેશ મહેતા. તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ તમામનું. ત્યાર પછી આમંત્રિત કરીશ મારા ગ્રુપના ફાઉન્ડર ઉદ્યોગ સાહસિક એવા આશીષભાઈ ઠક્કરને. આપ સ્ટેજ પર આવો. અંકુર વૈદ્ય, પ્રેસિડેન્ટ એફઆઈએ. અંકુર વૈદ્યને મંચ પર પધારવા સાદર વિનંતી છે. ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી સ્વાગત આપ સૌ મહાનુભાવોનું. આપ સૌને સન્માનવાનો મોકો આ મંચને મળ્યો છે તે બદલ અમે ખૂબ આભારી છીએ. આ એવા મહાનુભાવો છે, આ એવા વ્યક્તિત્વો છે જેમની સાથે, જેમની ચેતનામાં, જેમની ઓરામાં ક્યાંક ને ક્યાંક પધારો. પૂજ્ય શ્રી દાજી એમને તેઓ મંચ પર આવી રહ્યા છે. આપણે એમને પણ મંચ પર આવકારીએ. આ એવા મહાનુભાવો છે જેમના વિચારો ક્યાંક ઓરામાં આપણે હોઈએ તો ક્યારેક ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં કોઈ સ્પાર્ક આવે ને ક્યારેક આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં આપણને એના વિચારો થકી ક્યાંક પ્રેરણા મળતી હોય છે. એવા વ્યક્તિત્વ આજે મંચ પર બિરાજમાન છે. પ્રવાસી ગુજરાતીઓનો આ પર્વ છે અને પ્રવાસી ગુજરાતીઓના પર્વમાં હવે સર્વપ્રથમ આશીર્વચન માટે હું જેમને વિનંતી કરવા જઈ રહ્યો છું એ છે પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજી. માણસ માત્રને બધું જ સુખ મેળવવું છે. માણસ માત્રને બધાને પોતાનું જ ધાર્યું થાય ને એવું કરવું છે. અને એવા સંજોગોમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે માર્ગમાં, રસ્તામાં નીકળ્યા હોઈએ ત્યારે પેલા નટને યાદ કરીએ કે જે બે પોલ હોય, બે પોલ પર એક દોરી હોય ને દોરી પર સંતુલન જાળવતી એક નાનકડી દીકરી હોય. એ શરીરનું અદ્ભુત સંતુલન જાળવે છે. માણસ કદાચ શરીરનું સંતુલન બરાબર જાળવી શકે પણ મનના સંતુલનનું શું? ભૂતકાળનો ડર, આજની ચિંતા અને ભવિષ્યની પણ ચિંતા, આ બધાની વચ્ચે ક્યાંક માર્ગ જોઈતો હોય તો આખરે આપણે અધ્યાત્મ પાસે જતા હોઈએ છીએ. બેપ્સ સંસ્થા, એનું અધ્યાત્મ જગત, એનું માનવતાપૂર્ણ કાર્યોનું જગત અને એનું સંસ્કાર જગત, લાખો યુવાનોને જેમણે પોતાના વિચારોથી પ્રેરિત કર્યા, એવા પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજીને આપણે તાળીઓના ગર્જન સાથે આવકારીએ અને એમને સાદર વિનંતી કરીએ આપણને સૌને આ પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વમાં તેઓ એમના વિચારોથી પ્રેરિત કરે. આદરણીય પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજી. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। With these ancient prayers for peace, and also in the divine spiritual presence of Bhagwan Swaminarayan, in the equally divine presence of our Guru Hari Pramukh Swami Maharaj, Guru Hari Mahan Swami Maharaj, but apart from the spiritual presence, in the virtual presence of all the leaders of India, but most beloved presence, the actual presence of all of you who have spent that time and taken the effort to be with us today in the most precious presence of both the distinguished guests and all the people who are present here. Perhaps this idea of spirituality, virtual and actual, beautifully summarizes the parva that we are celebrating in the next couple of days. What do I mean? Because Gujaratis have the flavor of beautifully blending in the spiritual, the actual, and the virtual. Let me explain in a very simple way that all of you have come from far afield. As mentioned by Honorable Home Minister of India, from more than 20 countries and as many fields and professions. But at the same time, I was thinking as I was sitting down there and listening to everybody, at the same time, we have gathered here not to tell the world that Gujarati are great, but we have gathered today to tell the world that Gujaratis are good. Perhaps being good is far more important than being just great. Of course, this is a gathering of greatness, but making it a gathering of goodness will keep us shielded from arrogance. We are not here to amplify our arrogance, but we are here to exemplify our assurance to the world that together we can make a difference. As it was already echoed, कि ज्यां वसे एक गुजराती त्यां सदाकाळ गुजरात. Let's think of this whole sentence in a different angle. ज्यां वसे एक गुजराती, you know what it means? Gujaratis have the power of one. You may need many people of some other communities, but one Gujarati is enough to create a Gujarat and the experience of Gujarat. Never underestimate the power of one. The world needed just one Edison, and suddenly there was light. The world needed just one Nelson Mandela, and the whole of South Africa has remained gelled together. The world needed just one Neil Armstrong. You and I are never going to go to the moon, and yet we celebrate that man has conquered the moon. And the world needed just one Mahatma Gandhi. It changed the meaning of revolution. If one Gujarati can do so much, imagine what two Gujaratis can do. And I'm here to remind you, because as we are also celebrating 75 years of India's independence, the architects of independent India were two mighty Gujaratis, Mahatma Gandhi and Sardar Patel. Not only did they set India free, they unified India as we know it.
But come 75 years ahead in time, as Providence would have it, સંજોગ અવસાદ હું વાત કરું છું કે 75 વર્ષ પહેલા બે ગુજરાતી ભારતને સ્વતંત્રતા અપાવ્યું અને આજે પણ the architects of modern, safe, courageous, bold and brave India are two Gujaratis, Sri Narendrabhai Modi and Amitbhai Shah. What is the probability? But it gives you and me assurance that yes, if we think and if we are united and if our purpose is clear, we can make a difference wherever we are. His Holiness Pramukh Swami Maharaj often explained to us. He said, of course we should celebrate the heroes of the past. But how do we want to celebrate the heroes of the past? By becoming the heroes of tomorrow. It's no use just sitting and applauding. It's no use just sitting and dreaming. Can you and I make a difference? Because the quality of a Gujarati is not just limited to Gujarat. Let's think ahead. As a famous poet Uma Shankar Joshi said, "Evo to kevo Gujarati જે હો ગુજરાતી કેવડ એવો કયો ગુજરાતી જે એવું કહે કે હું કેવડ ગુજરાતી ગુજરાતી તો વિશ્વ માનવ છે અને ગુજરાતી તો વિશ્વ જાતિ છે." The people who have actually created India, who lead Gujarat, and when you yourself are a person who is making a difference in your position, your field, you are not ordinary. You have come from across the world and you have made a difference in your field and in your place of stay where you stay. But the power of a real Gujarati is not just by being a proud Gujarati. The real power lies in being a proud Indian, and it also lies in being a proud citizen of the world. We cannot limit ourselves to just a place or a language or just to a position. Can we contribute to the world scenario? And yes, we can. Just recently, as I have just explained, from a dependent India, we became an independent India. Now we have become a dependable India. I'll tell you why. I'm not just picking these words out of the lexicon or a dictionary. I've experienced it firsthand. Just 2 weeks ago, we were in France. And I think I need to share with you, all of you who are rational and thinkers, France is a religiously irreligious country. I think you understand what I'm trying to tell you. Where religion is a footnote. And I want to also explain that in France, when BAPS Swaminarayan Sanstha was given a land to build the first traditional Hindu temple in the whole of mainland Europe, when we were sitting with the former Prime Minister of France, Raffarin, the chief editor of La Figaro, Renaud Girard, and when we were discussing with some of the finest minds of France, you know what came up? All the people in one voice said, "Now please mark these words. These are not my words, but these are the words you should spread." All these thinkers of France, they told us, they said, "Your Holiness, at a time when Europe is fragmenting, we are all looking towards India. Our president has told us that be India-centric." And now wait for the biggest surprise that I got. They said that there are superpowers in the world, but there are also stable powers. India is a stable power because it has the depth of spirituality. You have a leader in your Prime Minister Modi, and you have great leaders in your traders and businessmen. So I wanted to tell you that when the world is looking towards India,
And it's not just us or the President of Mexico. It's not just Europe. It's not just other people. Inside their heart, that people know that India is a stable power. But it's not just limited to that. Just think, one of the most profound and most powerful leaders of the world is considered to be our Prime Minister Narendra Bhai Modi, who is a Gujarati. One of the most successful businessmen of the world is considered to be Gautam Bhai Adani, who is a Gujarati. And very humbly I want to share with you, often called the greatest saint of this century, His Holiness Pramukh Swami Maharaj too was a Gujarati. All these three people have taken the roots of Gujarat, never sacrificing the roots. Despite being the Prime Minister, Narendra Bhai Modi kept up the culture of fasting 9 days in Navratri. Find me one leader who could sit and sip water in the presence of the President of America. Culture was never diminished. Despite being a great businessman, I still remember every time Gautam Bhai takes his flight from London, he asks for pure food from the Nisdan Swaminarayan Mandir. Never sacrificed the principles. And despite being invited by the United Nations, where more than 2,000 religious leaders were present, and we were told that in the United Nations you can only speak the national language, still Pramukh Swami Maharaj chose to speak in Gujarati. First time ever Gujarati was spoken in the United Nations. Being proud of your roots does not make you limited. It actually gives you a scope of having the whole globe before you. So let us understand that we have gathered here today not just to celebrate the greatness of Gujaratis, but the goodness. Some wise man told me that Gujaratis stands for G for generosity, U for understanding. We have an amazing ability to understand. J for being just and jovial. A for being adventurous. Gujaratis are adventurous. R for being reliable. Very important, if nothing works, a Gujarati will work. A for being aware. Despite being humble, we are aware of everything. T for being trustworthy. I for being industrious. And S for being simple and spiritual. This is the acronym of Gujaratis. We have a value system. And I will just leave you with one simple story that I wanted to share with you. The value system is so important for all of us to preserve. The most important fact, I will leave you with one idea and conclude what I wanted to share with you. That once there was an emperor, and the emperor had 3 sons. આ સમ્રાટ પાસે 3 દીકરાઓ હતા, અને સમ્રાટની ઈચ્છા હતી કે કોને હું મારું સામ્રાજ્ય આપું. So the emperor comes to his 3 sons and he says that I'm giving you a golden chest. એક નાની સુવર્ણમય પેટી આપું છું. અને 3 દીકરાઓને કહ્યું કે હું 10 વર્ષ માટે જંગલમાં જાઉં છું, 10 વર્ષ પછી I will return back. Please take care of this golden chest. This is an important lesson for all our children, as Sunil Bhai just mentioned. He said, take care of this chest, I will come back after 10 years. 10 વર્ષ પછી, after 10 years, એ સમ્રાટ પાછા આવે છે. He goes to the eldest son and he asks that where is the chest? એ જે એમનો શ્રેષ્ઠ સન હતો એને કહે છે કે પિતાજી, મને ખબર જ હતી તમે મારી પાસે પહેલા આવશો. So I have kept that chest for the last 10 years in a safe place, guarded it by royal guards. Nobody has gone in and nobody has come out. Here the chest is for you and with you as you gave me. Preservation. A chest ni andar, a nana box ni andar, biyaran hatu, seeds.
So he said, I'm giving you your seeds back as they were. Preservation, preserve them as they were. બીજા દીકરા પાસે જાય છે અને બીજો દીકરો એવું કહે છે કે પિતાજી મેં જોયું અંદર સીડ્સ હતા. દર વર્ષે સીડ્સ બગડી જાય એટલે દર વર્ષે હું એના જૂના સીડ કાઢી અને એટલા જ નવા લેતો હતો. એટલે મેં તમને અત્યારે હું જે બિયારણ આપું છું તો કાલે તમે વાવો અને ઉગી શકે એવું બિયારણ છે. His job was transformation. એક જતન, બીજું પરિવર્તન. અને ત્રીજા દીકરા પાસે જાય છે કે બેટા મેં તને જે બોક્સ આપ્યું હતું એ ક્યાં છે? The little kid takes his father to the back of the palace and shows him, Father, can you see a forest? He said, yes. I saw that the seeds are not to be preserved, the seeds are to be planted. I have planted those trees and the forest you see are the seeds that you gave me to keep. We have three choices before us, all Gujaratis sitting here. Do you want to preserve the values? Do we want to transform the values? Or do we want to regenerate the values? Some might say preserve, some might say transform, and some might say regenerate. My attitude is all three. There are a couple of values of love, relationship, of joy we should preserve as they are. The values that give us success, the values that give us prominence in this world, we should keep transforming and evolving. And the values of our own belief and our own dreams, we should keep planting and regenerating. Today is a gathering of preservation, of transformation and regeneration, the values that make Gujaratis great and good. Which is the single most value that really identifies us. Today happens to be the birthday of President Abdul Kalam, 15th October. I knew him for 20 years. He loved Pramukh Swami Maharaj as his ultimate guru. And in my conversations with him, he once told me that, do you know what is the greatest quality of a Gujarati? Of course, I said generosity, understanding, adventurous. I said so many values. But Dr. Kalam, what a wise man. You know what he said? Gujaratis are the most peaceful people on this planet. And that's what I want you to do. Of course, you can become famous as traders. You can become famous as thinkers. Of course, go forward and become great, famous as actors, performers. Be famous in everything you do. But our trademark is peacemakers. Can you go home and make greater peace at home? Greater peace in your neighborhood, greater peace in the workplace. Can you go home and make a greater peace in your region, in the country and everywhere? If we are the greatest peacemakers, the compassionate people, I want to tell you that it is still possible, even if it seems like a dream. I will end with something that somebody asked me to share in just a couple of minutes. Recently, I think you know that Amit Bhai mentioned that the Prime Minister has made great temples and great spiritual regeneration of complexes in India. But I also want to share that there's nothing like a limit to any Gujarati mind or heart. You might have heard there is a temple which is coming up in Abu Dhabi. It is the first of its kind in the history of human civilization. Remember, when a Muslim king donates land for a Hindu temple, where our chief architect is a Christian Catholic, where our chief consultant is a Chinese who believes in goodness, where our project director is a Sikh, where the construction company is Shapurji Palanji Parsis, where the chairman of the entire project is from a Jain tradition and the foundation makers are Buddhist. This is the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi, but it has happened because His Holiness Pramukh Swami Maharaj, who was Gujarati by birth, he said a prayer that there will be a temple in Abu Dhabi, and the will
of our Prime Minister, who believes that along with trade and supremacy, culture and spirituality are equally important, I would leave you this morning with just the one idea. Of course, Gujaratis are made in peace, and Gujaratis are made for peace. It is our duty to upgrade peace and at the same time to spread peace. Let us become the greatest peacemakers on this earth. Once again, I thank Aina and TV9 and all the dignitaries on this stage and every one of you who are actually present for your families and for your health and happiness. Thank you for being here and showing the world that we can make a difference of being good. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद आभार पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी. You rightly mentioned that Pravasi Gujarati Parv as the event of reservation, transformation and regeneration of our values. आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में आगे के प्रवचन की ओर. બિલકુલ સ્વામીજીએ ખૂબ સરસ વાત કરી કે ગુજરાતીના ખમીરની વાત કરી, સાહસની વાત કરી અને આજે પાછળ પંખી ઉડી રહ્યા છે. ચોક્કસ વાત યાદ આવે છે કે આજે આ મંચ એ પ્રકારનો છે કે વિદેશમાં સ્થાયી થયેલા આ જ પ્રવાસી પંખીઓ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એ અમારા સૌના માટે સૌભાગ્યની વાત છે. એકવાર ફરીવાર આપ સૌના માટે તાળીઓના ગડગડાટ. અને હવે આધ્યાત્મની વાત નીકળી છે ત્યારે આમંત્રિત કરીશ આવા જ એક વ્યક્તિને કે જે લગભગ 150 દેશોમાં પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે, આધ્યાત્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે. આમંત્રિત કરીશ સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર શ્રી કમલેશભાઈ પટેલ દાજીને. આપ આવો અને આપની વાત મંચ સમક્ષ મૂકો. શ્રી કમલેશભાઈ પટેલ દાજી. My hearty pranams to one and all. It has been a very long session full of statistics and inspiration from Bihari Ji. He was talking about transformation, preservation and going beyond. I'm a person who thinks, how are we going to achieve it? What are the means to achieve it? From early childhood, I was moved by the life of Sri Ramakrishna Paramahansa. It used to bring me tears of sadness, not having a guru of that caliber, and naturally falling in love with such a personality would lead me to a person like Swami Vivekananda. But then alas, where is Swami Vivekananda today and where is Ramakrishna Paramahansa? So you remain in a state of confusion. Nevertheless, prayers were regularly being offered. I wanted to become like Swamiji, Swami Vivekananda. One day I left my home, entered the Shivji temple on the bank of Narmada river, and there many Aghori Babas were present. They were watching me from morning onward, and one elderly person came. He must have been of 82, 83 years of age. Bete, kya chahte ho? I was about 18 years then. ने बोला साहब आपका शिष्य बना दो मुझे. तो उनकी आंखों में करुणा आ गई, some tears, sadness. Said बेटे 82 ईयर में मैं घूमता ही रहा हूँ ये गिरवे कपड़े पहन के, अभी तक ईश्वर नहीं देखा मैंने. तू घर चला जा, serve your parents, look after your family. ठीक है. Same month, I came back to Ahmedabad to study. I was then in third year of pharmacy college, LM College of Pharmacy. There I met my friend, again Gujarati, settled in Zambia. He entered my room and he said, Krish, I see you meditate, but you are so disturbed. You are not, drawn inside. You're not attaining any level of consciousness.
So what to do? I don't have a guru. He says, come, I'll take you to a lady. She will put you in trance right away. Being Sunday, we took a rickshaw. He took me to her location, her place. She was a grihastha lady, very ordinary, didn't speak English. She asked me a few fundamental questions. Why am I sharing this story? Because it's so relevant to our existence today. She asked me a question, why do you want to meditate? I said, I want to become like Swami Vivekananda. I want to go and take the blessings of the great people who are, walking on our land, India, the auspicious land. Go into jungle, into forest and do my tapasya. He says, why would you do that? You believe God is everywhere. Why would you search for God there? It is not that God is lost. You are lost. If He is everywhere, He is in your heart, He is in your home also. That argument touched me. Then when I asked her about, I would also like to become celibate and ascetic. Then she quoted the example from her Guruji then. He used to say, God was not a fool to create two sexes if one was enough. You better respect the other sex also. Hinduism or Sanatana Dharma believes the creation was created by Durga. Ma Durga, we call her, right? That represents automatically you better respect sisters. They are not your enemies. They are not to be protected from. They are not going to kill you. They are not going to spoil your sannyasa. They are to be worshipped. You wash their feet and worship them. That is Hindu culture. It has been perverted by many so-called religions today. This Gungat business was never there in India. It was perverted because of fear, and many saints who came forward, they spoiled their minds. They looked down upon them. And that is the main reason why India continues to degrade and fall. Economic growth is not what India represents. Economies comes and goes. Many empires came, Roman Empire, Turkish Empire, what not, Mughal Empire. Where are they today? India thrives because of its spiritual foundation. This spiritual foundation today is very weak. People have been talking of Garba and the culture. Garba is not a culture. It's a pastime, entertainment. And what has become of it? Something that you do in the worship of Durga Ma, Ambaji, with a lot of reverence, a lot of respect. You dance away with joy. But today, it is profane. It is called disco Garba. We have to be ashamed of this culture. How long can you tolerate this nonsense? And if you like to see the statistics, I'm not going to give you economic statistics. This is something will remind you how fallen we, the Gujaratis, are. You may consider many speakers have spoken how good you are. I'm trying to show you the other side. We are all great people, good. But it's a hollow greatness. Where is the character foundation? Where is the moral foundation? Greed everywhere. Where is the peace in people? They're always running around. Where is stability? Garba, for example. Do you know the maximum abortion? You connect to any gynecological hospital. The pharmacy, where the morning after pills are being sold. Two statistics you need to know. Which is the period between
when maximum abortion happens and maximum sale of morning after pill happens. It is between Dashera and Diwali. Does that tell you anything? Are you such a proud Gujaratis? Now he listening to this. And what happens when Ganesha is being thrown into rivers? They pollute the rivers. Is this the tradition we want to adopt? You read Vedas. Where will you find Ganesha in Vedas even once mentioned? Spirituality, of course. We say we are spiritual, but do you understand the meaning of spirituality? What is the difference between religion and spirituality? All the religions, they say we are better than the other. They keep fighting. Spirituality is an equalizer. Religion teaches you dogmas, makes you great, makes you feel great. Oh, we are the best. Gujaratis are the best. Hindus are best. That creates enmity. When our sages and saints say, the Atman that is within me is also in the other person. But this is a knowledge, superficial knowledge, bookish knowledge. When we do experience that, when we move from Hridaya Chakra to Atma Chakra in our yogic journey, only then we experience the Atma within and Atman in another person as same. And when you do witness this, that's when the knowledge becomes redundant. You don't need knowledge. You don't need belief system. We believe in God. Everybody says, oh, I do believe in God. You ask your grandmother, or mother, or father, do you believe in God? They'll say, yes, we do believe in God. You ask them, why do you believe in God? What will be their answer? Our religion says so. Our Shastras say so. But what about you? What is your system? Have you experienced? Then there is no word. Knowledge may be great, but without experience, you are lost. Just as currency, you know, you are all energies, and especially NRI people know how the currencies are supported. Currency is supported by the political environment of a country, gold backing, other resources that backs the currency. Without this backing, currency devaluates. Knowledge, without the backing of experience, it remains superficial, and you will ever remain thirsty. You can read the entire Gita, you can memorize it like hell, but without experiencing what Lord Krishna is talking about, sthit pragya, that can never happen without meditation. And what is meditation? Going inward. I'll share with you a little episode which my father taught me. A small story kind of a thing. He said, you have not seen any being born. I was too small. He would say that when a mother delivers a child for the first time in this world, baby begins to cry. And this cry of a baby is the first time and the last time. Whenever baby cries, mother smiles. If baby doesn't cry at that moment of birth, mother will become very anxious until doctor tilts the baby and taps the back, resuscitate heart or the lungs, and see if the baby would cry and breathe. And if still the baby does not cry, everyone in the family cries because life force did not come with the body. That life force we call Atman, soul. It doesn't really matter by what name we call it.
But since birth, till we kick the bucket, till our last breath, it is with us. It is not in any temple. It is not in Dwarka or Mathura. It is not in Kashi or Banaras. It's in your heart. And the moment we start looking for this outside, can your soul bestow real peace? Think about it. You are looking for, you are worshipping every goddamn thing that appears in front of you. Any statue you see, you will bow down. And why do you bow down? You are afraid. It is the fear that makes you bow down. Religion uses only two beautiful instruments. One is fear, fear of hell. And second, temptation of heaven. If you do this, you'll go to heaven. If you don't do this, you'll be punished. These are the two instruments they use. And what about the soul that gives you life? No one pays attention. Mandir hai, ghar mein hai. You bow down. By mistake, if you go out in hurry, and suddenly you remember in your car, oh, I didn't do namaskaram to our God. They make a U-turn and come home and do namaskar and then go. What is this tamasa? Is this religion? This is not religion. This is not even spirituality. This is not even human being. So we have to really, really rethink about how we need to carry our life. If you really, really want to become happy, happiness is not about having things, but being happy without having anything in life. Can you be that? It does not really also mean that I have to shun my bhautik jivan or material life. If you have the ability to make million, go ahead and make 10 million. There is nothing wrong in making money. But for a few minutes, say thank you. Close your eyes and try to experience that deity, that Atman that has been giving us life. Even for a few minutes you sit and close your eyes and try to experience that deity who is within your heart. Be respectful to that. And you will learn slowly as you move your attention. And it will happen automatically when you move from the Hridaya Chakra to Atma Chakra. And when you start witnessing that Atman outside and Atman inside is also same, you become like one of those Vedic sages who used to see God in the sky, who used to witness God in the mountains, who used to witness gods in the trees and everywhere else. That's why in Vedic times, there was not even one temple. Not even one. And we are fighting for temples and glorifying temple building. This is my personal view. You can all have as many temples as you like. But without going inward, this external worship is just nothing but a drama. No one has achieved God just by bowing the head. You have to bow your heart. You have to melt your heart and respect all. Over and above, please remember, this Garba culture has to stop. If you really want India to become a spiritual nation, much worse happens during these times, and the people take liberty. If I can do this during these holy hours, what all is possible later on during unholy hours. So we are granting freedom unnecessarily under the pretext of religion. Religion has been dividing humanity for so long. Many sansthas, all spiritual people, they never come together. Have you noticed that?
Terrorists will come together. Gundas will come together. They'll share the informations, new technology, how you can destroy another country or how to terrorize people better. They share that knowledge. Saints, sages, they don't want to share anything with anyone. Why? They want to become unique. They have their own ego. Same thing when it comes to becoming rich. Nothing wrong in becoming rich. Many good people, they say, I don't want to become rich. Why? Some good people say, I don't want to go into politics also. Since all politicians are bad, not all politicians are bad though. There are great human beings. You all know who are good and who are bad. If good people stop earning money, if good people stop entering into politics, what will happen? Only bad people will go after money. You're opening the ways for them. Only bad people will go into politics, then you should not complain. Every good human being must earn tons and tons of money and share it in the society. Politicians, good-hearted people should enter into politics, not being discouraged by what we see in day-to-day life. I wouldn't say anything further. You are all wise. I have said more than enough. Try to lead a balanced life, integrate spirituality with Bhautik Jivan. Bhautik Jivan is not against spirituality. You see all avatar Purushas, all gods, Lord Krishna, Lord Rama, their families, their brothers, all our sages from Vedas, they led a complete family life. Only in family life, you know what is sacrifice, you know what is love. It is with this, use your heart and make your own decision how to follow my path towards Godhood. Thank you. धन्यवाद पूज्य कमलेश भाई पटेल दाजी, आपने अपने विचार जो थे वो सभा के समक्ष रखे और स्थित प्रज्ञता, ध्यान, सहज ध्यान, इसके बारे में आपके जो विचार थे वो आपने अपने सामने रखे, मानवता के विचार। और अब समय है मंच पर महानुभाव जो विराजित है उनके स्वागत का, उनको फेलिसिटेट करने का। फेलिसिटेशन ऑफ द डिग्निटरीज। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री प्रफुल्ल भाई नायक to come over to the stage and Shri Barun Das, CEO and MD TV9 to come over to the stage. મંચસ્થ મહાનુભાવોનું સન્માન કરીશું. પ્રફુલ્લભાઈ અને બરુણ દાસને વિનંતી તેઓ મંચ પર આવે અને મંચસ્થથી મહાનુભાવો છે તેમને સન્માનિત કરે. पुष्पगुच्छ से हम महानुभावों का सम्मान करेंगे. आईना इंडियाना प्रेसिडेंट श्री प्रफुल्ल भाई नायक અને શ્રી બરુણ દાસજી. સર્વપ્રથમ સન્માન કરીશું પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજીનું. આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ બ્રિટન, યુકેમાં ઉછેર, પણ દિલ્હી, ગાંધીનગર, ન્યૂ જર્સીના બેપ્સના મંદિર હોય, અક્ષરધામ હોય કે અબુધાબીનું મંદિર હોય, આ બધામાં એક થિંક ટેન્ક અને જેમના આશીર્વાદ હંમેશા યુથ પર વરસતા રહ્યા છે, પૂજ્ય બ્રહ્મવિહારી સ્વામીજી. તાળીઓના ગડગડાટથી એમને વધાવી લઈએ. ત્યાર પછી સન્માન કરીશું સ્પિરિચ્યુઅલ લીડર શ્રી કમલેશભાઈ પટેલ દાજીનું. હાર્ટફુલનેસથી પ્રચલિત શ્રી રામચંદ્ર મિશન 150થી વધુ દેશોમાં તે આધ્યાત્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે. He has been the President of Sri Ramchandra Mission, a non-profit organization founded in 1945. દાજી, આઈના અને TV9 બંને
આ તમામ મહાનુભાવોનું સ્વાગત અને સન્માન કરી રહ્યા છે. ત્રીજા ક્રમે એવોર્ડ વિનિંગ ફિલ્મ મેકર નલીન પાન, મિસ્ટર પાન નલીન. એમને બેસ્ટ ઓફ લક કહેવું પડે અત્યારથી જ, કેમ કે એમની ફિલ્મ છેલ્લો શો એ નોમિનેટ થઈ છે ઓસ્કાર એવોર્ડ માટે, તો બેસ્ટ ઓફ લક. એ ઉપરાંત સમસેરા, વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ અને એંગ્રી ઇન્ડિયન ગોડેસ જેવી અનેક ફિલ્મો. એ પછીના ક્રમે યોગેશ મહેતા, CEO of Petrochem in Middle East, the largest chemical distributor in the Middle East, has been phenomenal. योगेश मेहता का स्वागत सम्मान. દુબઈના પેટ્રો કિંગ કહેવાય છે યોગેશભાઈ મહેતા. અને હવે સ્વાગત કરીશું, સન્માન કરીશું આશીષભાઈ ઠક્કરનું. Ashish Thakkar founded his own company Mara Group in 1996 at the age of only 15. એક યુવા સાહસિક ઉદ્યોગપતિ છે આશીષ ઠક્કર. અને હવે સન્માન કરીશું પ્રેસિડેન્ટ ઓફ FIA અંકુરભાઈ વૈદ્યનું. આ તમામ મહાનુભાવો દેશ અને વિદેશમાં ગુજરાતનો ડંકો વગાડી રહ્યા છે. જે તે દેશના GDPમાં પણ આ તમામ મહાનુભાવોનો એક સિંહ ફાળો ચોક્કસ હોઈ શકે છે. તો આ મહાનુભાવો એ ગુજરાતની ખમીર, ગુજરાતના સાહસને ચોમેર પ્રસરાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે. સુનિલભાઈ નાયક, આયના અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ, એમનું પણ સન્માન થઈ રહ્યું છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે આ તમામ સ્વાગતને વધાવીએ, કારણ કે ગુજરાતીતા, ગુજરાતીપણાનું આ સ્વાગત છે, ગૌરવ બનતા ગુજરાતીઓનું આ સ્વાગત છે મિત્રો. અને હવે પૂજ્ય દાજી શ્રી કમલેશભાઈ પટેલને વિનંતી કે તેઓ એમનું એક પુસ્તક મંચ પરના તમામ મહાનુભાવોને આપે. મંચ પરની જે વ્યવસ્થા છે એમાં જે મિત્રો છે એમને વિનંતી કે તેઓ મંચ પર આ પુસ્તક લઈને આવે. આવી રહેલું એક પુસ્તક દાજી, એમને વિનંતી કે તેઓ મંચ પરના મહાનુભાવોને આ પુસ્તક ભેટ રૂપે સુપ્રત કરશો. This book is full of wisdom, Daji's wisdom of many years to combine ancient Indian wisdom with modern scientific research. સાયન્ટિફિક વૈજ્ઞાનિક રહસ્ય અને ડાહપણ, કોઠા સૂજ, એનું એક કોમ્બિનેશન આ પુસ્તકમાં છે, જેમાં દાજીના પોતાના વિચારો છે. આ પુસ્તકને આપણે વધાવી લઈએ. ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી આ પ્રસંગને વધાવી લઈએ. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે એક મોટું નામ કમલેશભાઈ પટેલ દાજીનું. તેમનું આ પુસ્તક એ આપ સૌના જીવનમાં પણ આધ્યાત્મનો નવો સંચાર કરશે તેવી અપેક્ષા રાખીએ. ધન્યવાદ. આ સાથે જ આ ઉદ્ઘાટન સમારોહ અહીં સંપન્ન થાય છે. ચિરાગભાઈ, બિલકુલ. શ્રોતા દર્શકોનો પણ આભાર માનીએ. આપ સૌ અહીં દૂર દૂરથી આવ્યા છો. મંચ પરના મહાનુભાવો જે અહીં બિરાજમાન છે એમનો પણ TV9 અને આઈના વતી અમે આભાર માનીએ છીએ. સાથે સાથે એ પણ અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આપ સૌએ ક્યાંય જવાનું નથી, કેમ કે હવે અલગ અલગ સેશન અમે લોકો શરૂ કરાવી રહ્યા છીએ. અલગ અલગ મહાનુભાવો અહીંયા આવશે, વિવિધ વિષયો પર તેમના મંતવ્ય રજૂ કરશે. અને આ સેશન માટે આમંત્રિત કરીશ અમારા સહયોગી શિવાની અને નરેન્દ્રસિંહને. આપ આવો અને સ્ટેજ સંભાળો. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.
હું કહીશ કે સાવ અલગ જ તાસીર છે આ ભૂમિની કે મહાભારત વાવો તો ગીતા નીકળે છે. જી હા, આજે આપણે સૌ આ જાજરમાન જલસાના સાક્ષી બન્યા છીએ. કેન્દ્રીય પ્રધાન મીનાક્ષી લેખીજી પણ થોડી જ વારમાં અહીંયા હાજર હશે. તેમના વિચારોનું પણ આદાન પ્રદાન હશે. અમારા સહયોગી દિનેશ ગૌતમ પણ અહીં મંચ પર હાજર હશે અને એક એવો સંવાદ આપણે સૌ અહીંયા કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેના કારણે આગામી દિવસોમાં ન માત્ર ગુજરાતની પણ દેશની પણ દશા અને દિશા આપણે બદલી શકીએ. ઓવર ટુ યુ દિનેશ. माफ़ कीजिएगा, यूं आके आपको बीच में मैं डिस्टर्ब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया अपनी जगह पर आ जाएं, और इसलिए भी क्योंकि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. बातचीत का वो क्रम अब आगे आप देखने वाले हैं विदेश राज्य मंत्री के साथ, जिसमें बहुत सारे ऐसे पहलुओं को डिस्कस किया जाने वाला है जिसका आप खुद भी इंतजार कर रहे हैं. तमाम यहाँ मौजूद गणमान्य आगंतुकों से मैं ये अनुरोध करता हूं कि वो कृपया अपनी जगहों पर आ जाएं, कृपया अपनी सीट पर आ जाएं. प्लीज सर्स, क्या मैं आप सबसे ये अनुरोध कर सकता हूं कि आप जल्दी से अपना स्थान ले लें और हम अब चर्चा के, बातचीत के और महत्वपूर्ण लोगों को सुनने के क्रम में आगे वहां बढ़ने वाले हैं जहां प्रवासी गुजरातियों, प्रवासी भारतीयों के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत हम करने जा रहे हैं जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे. कृपया अपनी जगह ले लें. मैं चाहूंगा आप ये गुजराती में भी एक बार सबसे अनुरोध कर लें. તો અહીંયા હાજર બધા જ ગુજરાતીઓને ખાસ કહેવાનું કે તમામ પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે અને જલ્દી જ આપણે એક એવો સંવાદ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે સંવાદ આજે ગુજરાતની ધરા પર થઈ રહ્યો છે. તમે ગુજરાતના મહેમાન બન્યા છો અને ગુજરાતમાં જ્યારે દેશ આખાની ચર્ચા થતી હોય, દેશ આખાની ચિંતા થતી હોય, ત્યારે એ પર્વ, એ સંયોગ કેટલો મહત્વનો બની જાય આપણે સૌ જાણીએ છીએ. ફટાફટ બધા જ પોતાના સ્થાન પર આવી જાય. ફરીથી મીનાક્ષી લેખીજી મંચ પર છે, દિનેશ ગૌતમ મંચ પર છે અને જલ્દી જ આપણે આ સંવાદની શરૂઆત કરીએ છીએ અને તમામ પોતાના સ્થાન પર આવી જાઓ. और एक बार फिर से मैं आप सब से विनम्र अनुरोध करता हूं अपनी जगह पर आ जाएं कृपया. आप देख रहे हैं मंच पर आसीन हैं हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण विभागों को देख रही मंत्री महोदया, जिनसे हम संस्कृति के विषय में भी बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं विदेश मामलों में, खासतौर से वो मामले जो प्रवासी गुजरातियों से ताल्लुक रखते हैं, प्रवासी भारतीयों से ताल्लुक रखते हैं. कृपया, और आप सब लोग कमाल की ऑडियंस हैं. जैसे ही मैंने आपसे अनुरोध किया आप लोग अपनी जगहों पर आने भी लगे. अमूमन होता यह है कि लंबे सेशंस के बाद लोग जब उठते हैं तो बैठने में वक्त लगता है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से मेरी बात मानकर अपनी सीट्स पर वापस आप लोग गए हैं वो कमाल है, और इसके लिए आप सबका धन्यवाद और साधुवाद. क्या आप ये बात गुजराती में यहाँ की ऑडियंस को बोल सकते हैं? क्या हम गुजराती लोग हैं ना, થોડે બાતુની જ્યાદા હોતે એટલે આપણે વાતો થોડીક ઓછી કરીએ. આજે સંવાદ છે, મહામંચ છે, તો એના પરથી આપણે જે મહાનુભાવો છે એમને સાંભળીએ વધારે અને તમામ જે અવર જવર છે એને પણ હું ટીમને કહીશ કે તેઓ આ તમામ જે ગેસ્ટ છે એને પણ પોતાના સ્થાન પર લઈ જાય. અને अब मैं उस बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आप जानना चाहते हैं कि भारत सरकार का रुख क्या है, आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, पहले से जो चल रहा है उसमें क्या ऐसी चीजें की जा सकती हैं ताकि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए डिफाइन किए थे उनको हम बहुत जल्द अचीव कर पाएं. तो आइए वो बातचीत, उस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं. एक बार जोरदार ताड़ियोंથી મીનાક્ષી લેખીજીનું સ્વાગત. हेलो चेक, हेलो हेलो 1 2 3. हाँ, थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पर पहुँची. और मैं अभी इनफैक्ट मैं भी कल रात यहाँ पहुँचा इस आपके साथ विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए, और जब मैं इसको देख रहा था तो मैं हालांकि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ जो इस इनिशिएटिव को लेकर आगे चल रहे हैं, आईना और TV9 भारतवर्ष, लेकिन मैं ये देखकर दंग हूँ कि कितने कम वक्त में कितनी बढ़िया तैयारियों के साथ ये आयोजन किया जा रहा है. इसके सभी वो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए उनको बधाई,
और बहुत सारा साधुवाद। एक ताली उनके लिए होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और दूसरे ये भी कि ये पंछी जो हमको दिखाई दे रहे हैं यहां, ये बहुत कुछ कहते हैं। पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ये दिखाते हैं हमारे ये प्रवासी गुजराती कि अगर दिल में हौसला है और आवाज के साथ आगे जाने का इरादा है तो फिर कोई रोक नहीं पाता। लेकिन पंछियों के बारे में ये कहा जाता है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो ये जो प्रवासी गुजराती यहां से गए, वो वापस अपने देश में आकर, अपनी मिट्टी में आकर ही वो सुकून पाते हैं जो असल में उनको चाहिए होता है, या फिर अपने दिल में वो मिट्टी की महक लिए हुए वहां होते हैं जहां होते हैं। और हिंदुस्तान, जैसा मीनाक्षी लेखी जी को मैं अक्सर सुनता हूं कि इट इज फॉर द ग्लोबल गुड दैट वी डू थिंग्स फॉर। और ये भी कि हिंदुस्तान एक ऐसी शक्ति रही है जिसको सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ रेकन किया जाता रहा है। तो वो जो मिट्टी की महक है वहां सुगंधिए फैलाते रहते हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करें और ये समझें कि हमारे इन संस्कृति वाहकों को, हमारे इन कल्चरल एम्बेसडर्स को, हमारे इन गुजराती प्रवासी भाइयों बहनों को और मजबूती देने के लिए हिंदुस्तान सरकार क्या कर रही है। और शुरुआत करूंगा ईश्वर की प्रार्थना के साथ, क्योंकि यहाँ तमाम वो विद्वत जन बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें यही संस्कार दिए हैं कि बगैर उस कनेक्टिविटी के, बगैर उस कनेक्शन के सारा मामला अंधियारा ही है। यन मंगलानाम च सुमंगलायते पुनः पुनर्मंगल मस्तु संततम। जिनके ध्यान से ही सब कुछ सुमंगल हो जाता है, उनके ध्यान के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रवासी गुजराती भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, गणमान्य लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने डंका पीटा है हिंदुस्तान का बाहर की जमीन पर जाकर। अभी तक जो किया गया है वो सराहनीय है। LM सिंघवी साहब की कोशिशों से लेकर यहाँ तक आज जो हमने किया, वो वाकई ये दिखाता है कि हम अपने प्रवासी भाई बहनों को लेकर गंभीर हैं। लेकिन इसको लेकर आगे और क्या किया जा रहा है? देखिए, ये तो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जब से प्रवास शुरू होगा तो वापस आना भी शुरू होगा, मन में ऐसा ही रहेगा। और जब एक मुश्किल आएगी तो उसका हल निकलेगा, और जब बाकी मुश्किलें आती रहेंगी तो उनका हल निकलता रहेगा। तो ये तो अनंत प्रवाह है, और इस अनंत प्रवाह का जो समय है वो निश्चित करना, संख्या निश्चित करना या प्रश्न निश्चित करना, वो असंभव है। ये तो चलने वाली चीज़ है जो चलती रहेगी, चलती रही है। और जब भी समय की तुलना होती है तो हम लोग कभी पिछले 75 वर्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एक्टिव मेमोरीज हैं उसमें 75 वर्ष इंगित है। लेकिन जो इंगित नहीं है वो कई हजार वर्ष है। तो उन हजारों वर्ष को भी याद करें तो हमारा ये प्रवाह हमेशा चलता रहा है और आगे चलता रहेगा। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन at the cost of being little immodest, I will say the same, that yes, we are the cradle of civilization, and as previous speakers have already said, that we have dithered also at times, and time to come back keeps coming back. कि अपने मुद्दे से, अपनी चीज़ों से हम भटके भी हैं, और जब भटके हैं तो वो भी समय आता है कि हमें वापस अपनी चीज़ों पे जाने का भी समय आता है। तो ये लगातार होने वाली फ्लक्चुएशन है, और कोशिश यही कि हम उभरते भी रहें, बढ़ते भी रहें और जुड़े भी रहें। दोनों परस्पर विरोधी सुनने में लगता है, लेकिन वो परस्पर विरोधी है नहीं, क्योंकि ये संभव है। तो ये जो बात कही आपने कि ये डायनेमिक सिचुएशन है और इसको हमेशा एड्रेस करने के लिए चीज़ें, परिस्थितियां बदलेंगी और उस हिसाब से कॉल लेना पड़ेगा। ये बात सच है कि मौजूदा सरकार ने भारतीयों को, जो डायस्पोरा हमारा बाहर रह रहा है, उनके बीच में आपने देखा होगा, जब भी हमारे प्रधानमंत्री गए हों या दूसरे लीडर्स हमारे जब जाते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि वो उस फ्रेटर्निटी से, वहाँ हिंदुस्तानियों से मिलें, उनके बीच में जाएं और ये कनेक्शन जो है ये और प्रगाढ़ हो।
और ये सरकार ने और ज्यादा बढ़ चढ़ कर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑपरेशन गंगा के समय आपने जिस तरीके से वहां रह रहे यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए पूरी एम्पैथी के साथ और पूरी सक्रियता के साथ उनको लाने में जो भूमिका निभाई है, उसके लिए जरूर इस प्रयास के लिए, ये जो प्रयास किए जा रहे हैं मौजूदा सरकार की तरफ से, इसके लिए आपकी तरफ से ताली होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ऑपरेशन गंगा में कमाल का काम किया गया, अगर आप समझते हैं कि इस समय कहीं पर भी अगर हिंदुस्तान के किसी मंत्री की विजिट होती है, प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं और वहां हिंदुस्तानियों के साथ मिलना घुलना वो नहीं छोड़ते और कमाल का प्रतिसाद मिलता है, तो इसके लिए तालियां भी जबरदस्त होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि हमारे जो एनआरआई गुजराती हैं वो थोड़ा तालियों के मामले में पता नहीं क्यों कंजूस हो गए हैं। बहरहाल मैं अगली बात ये समझना चाहता हूं, ये डायनेमिक तो है मैम, लेकिन जब लोग और हम सब ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, पहले से कहीं बढ़ी है, और उसी समय हम ये सुनते हैं कि ब्रिटेन में वहाँ की होम सेक्रेटरी कहती हैं कि यहाँ ओवरस्टे कर जाते हैं लोग वीज़ा के बाद, और इसकी वजह से हमारी जो फ्री ट्रेड डील है वो भी मुश्किल में आ सकती है। इधर अमेरिका के संदर्भ में हम सुनते हैं कि वो वीज़ा में बहुत इंतज़ार करवा रहे हैं लोगों को, जबकि चाइना के लिए इंतज़ार नहीं है वहाँ के लोगों को वीज़ा, जबकि उसको वो अपना एनिमी कंसीडर करते हैं। ये क्यों हो रहा है मैम? देखिए, बहुत सारी परतें हैं और जिस तरीके से राजनीति की परतें होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उससे कहीं ज़्यादा परतें होती हैं, और उन परतों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, मन में डर, जैसा दाजी ने अपने में बोला कि डर एक चीज़ है, लेकिन डर कई बार लोगों को लाइन पर भी रखता है, और कई बार मतलबी, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, उस तरीके की भी तो फिलॉसफीज़ हैं। तो बहुत सारी परतें हैं जिसके कारण कुछ लोग, देश या व्यक्ति इस तरीके का भाव रखते हैं। पर आपकी जो पुरानी बात है मैं उस पर आना चाहती हूँ। आपने ऑपरेशन गंगा की बात की, तो ऑपरेशन गंगा तो वो ऑपरेशन था जिसमें यूक्रेन और रशिया, दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और जब दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं उन दोनों देश के ऊपर प्रिवेल कर जाना और उनको ये समझा पाना कि भाई देखिए, मेरे जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और कुछ छोटी मोटी संख्या नहीं, 22-23 हज़ार, उन बच्चों को, उन लोगों को मुझे यहाँ से निकालना है, क्योंकि ना वो एक तरफ की तरफ है ना दूसरी तरफ की तरफ है, और वो पॉजिटिव लोग हैं। भाई पैसा खर्चते हैं उनके माँ बाप, आपके यहाँ फीस भरते हैं, जहाँ रहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, कोई वीज़ा वायलेशन नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई ड्रग के रैकेट में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कोई टेररिस्ट नहीं है, और इसलिए हमें इनको निकालना है। और यूक्रेन और रशिया आपस में भिड़ी हुई है पूरी तरीके से, लेकिन दोनों देश अपना युद्ध विराम करते हैं ताकि भारतीय वहाँ से निकल पाए, और भारतीय वहाँ से निकल कर कहाँ जाते, जो भी नज़दीक के अन्य देश हैं, वो भी भारतीय देश नहीं है लेकिन भारतीय मूल के लोगों को मोल्डोवा, रोमेनिया, हंगरी, ये तमाम देश, पोलैंड एक्सेप्ट करते हैं, और वहाँ से उनका रास्ता बना के भारत सरकार उनको निकाल के लाती है। तो अगर ये काम किसी को सरल सुनाई देता है या दिखाई देता है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। ये काम सरल था क्या? 200-300 लोगों को निकालना अलग अलग देशों के लिए मुश्किल हो गया, और यहाँ पर जो तादाद थी वो 22 से 25 हज़ार के बीच की तादाद थी, और वो निकालना, ये मुझे यकीन है कि कोई हाथ ऊपर नहीं जाएगा। 23 हज़ार लोग, और सिर्फ ये नहीं, ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वहाँ की स्थिति के बारे में जो लोग बैठे होते हैं उनको पता होता है कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ अच्छे भले टाइम में क्या होता है और ऐसे टाइम पे क्या होगा। तो अफगानिस्तान से देविक शक्ति के मामले में, और ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कभी आर्टिकल 370 पर बोलते हैं, कभी CAA पे बोलते हैं, तमाम चीज़ों पर कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उन लोगों के लिए भाषण है कि भाई इतना ही सरल था, इतना ही आसान था, तो वहाँ से अन्य लोगों को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी जिनके पुरखे वहाँ रहते थे। आज हम भारतीयों की बात करें, जो मैंने डायनामिक बात की आपसे, तो डायनामिज्म तो ये है कि 75 साल से पहले, 100 साल से पहले, 200 साल से पहले
500 साल पहले, कई और 700-800 साल पहले, 1000 साल पहले, वो सब तो भारत का हिस्सा ही था। वहाँ पर हमारे ही परिवारों के लोग रहते थे, उनको यहाँ आना पड़ा, वो भी एक तरीके की माइग्रेशन थी ना। 75 साल पहले 47 के अंदर मेरे परिवार के लोग यहाँ आए और मेरी दादी अफगानिस्तान से थी, घर में उनके बच्चे पश्तो बोलते थे। तो ये सब हमारा ही हिस्सा था, लेकिन हम माइग्रेट होकर सिकुड़कर इस तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर हमारी परंपराओं को जिंदा रखना एक संभव था, एक पॉसिबिलिटी थी। वहाँ पर संभव नहीं था, तो जो लोग वहाँ फंसे रह गए और इतने साल से रहे, उनको वहाँ से इस हालात में निकाल के लाना, ऑपरेशन दैविक शक्ति को आप कितना आसान मानते हैं? आप वंदे भारत में 1 करोड़ से अधिक एनआरआईज, भारतीय अन्य लोगों को कोविड के दौरान निकाला गया, लाया गया, उसको आप कितना आसान मानते हैं? वो भी किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन यही मेरी रोड जहाँ मैं बैठी थी उसके पीछे एक महिला बैठी थी, मैं उनको नहीं जानती, उन्होंने खुद अपना परिचय दिया और एक ईमेल के ऊपर, एक फ़ोन कॉल के ऊपर उनका मैसेज आया कोरोना के टाइम पे, जिसका मैंने रिस्पॉन्ड किया और मेरे ऑफिस ने उनको कॉल करके उनको जो मदद चाहिए थी वो पहुंचाई। अब मेरे को नहीं मालूम था कि वो एनआरआई पर्व में मेरे को मिलने वाली है, नहीं मालूम था ना। कोई कभी मिलेगा ये भी नहीं पता होता, ये भी नहीं पता होता वो किसकी डॉटर इन लॉ है, वो किसकी पत्नी है, ये भी नहीं मालूम होता, लेकिन वो आज आके मुझे पता चला। तो ऐसे अनगिनत भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं, हम लोगों से जो बन पाया, जिस भी स्थिति में हो पाया, वो हमने किया। और ख़ास तौर पे इतने सारे स्टूडेंट्स थे, और वो सब स्टूडेंट्स भी आप देखिए, किसी के पास खाना नहीं है, किसी के पास रहने की दिक्कत है, सब प्रॉब्लम है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ये संभव हुआ क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्ति कर रहे थे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री वो नहीं होते, कोई और व्यक्ति, मुझे समझ नहीं आता कि फिर देश की क्या हालत होती और उस डायस्पोरा में बैठे हुए लोगों की क्या हालत होती। क्योंकि जब ये मुश्किल आई, जैसे मैंने पहले कहा, मुश्किलें आती रहेंगी और हम उसका जवाब ढूंढते रहेंगे। तो मुश्किल आई, बच्चों के पास ब्लैंकेट्स नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, वो सब कुछ यूक्रेन में छोड़ के पड़ोस के देशों में आ गए। तो हमारे डायस्पोरा के लोगों ने मदद किया। एक नरेंद्र भाई मोदी की आवाज के ऊपर सब खड़े थे या नहीं, बताइए? आप लोग थे जो अन्य देशों से आए हैं। अगर यूएस में कोई था, अगर कहीं पर हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, उनको कोई तकलीफ थी, तो हमारे समाज के लोगों ने मदद की। ये संभव हो पाया क्योंकि एक कोहेसिव ताकत जो हर भरसक प्रयास करती है वो मदद करने का, जो भी अक्षम व्यक्ति उस समय दिखाई दे रहा है, जिसको उस समय मदद चाहिए, जिसकी जो मदद हो सकती है वो करेंगे ना। इसी को मैं कहती हूँ कि बेनिवोलेंट पॉजिटिव फोर्स, दैट्स व्हाट इंडिया इज। भारत एक ऐसा देश है जो कि ताकतवर, जितना ताकतवर होगा उतनी शांति, उतनी अच्छाई दुनिया में बढ़ेगी। क्योंकि टेम्परामेंटली, कोर ऑफ हार्ट, जो हृदय चक्र और आत्म चक्र की बात सुबह हुई, वो हृदय चक्र, आत्म चक्र थोड़ा बहुत इधर उधर हिल जाता है, लेकिन वो अपने स्थान पे रहता है। उसको मालूम है भाई क्या गलती है, उस गलती को सुधारने का काम भी करते हैं और मदद करने का कंपैशनेटली भी काम करते हैं। खासतौर से गुजरात के संदर्भ में क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं मैम, तो न जाने कितने ऐसे लोग जिन्होंने महात्मा गांधी समेत न जाने कितने नाम आप ले सकते हैं जिन्होंने विदेशों में जाके भारत की पताका फहराई है। लेकिन वहीं पर कुछ खबरें हम ऐसी भी सुनते हैं जहां पर लोगों को एजेंट्स के जरिए ले जाए जाने की कोशिश होती है, अनाधिकृत तरीके से दूसरे देशों में ले जाए जाने की, वहां छोड़ने की कोशिश होती है और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करके लोग वो जोखिम लेते भी हैं। भारत सरकार इसको खास तौर से गुजरात के संदर्भ में कैसे पहचान रही है और इसको कैसे एड्रेस करने के बारे में सोचा जा रहा है? एक तो हम लोगों ने कई माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट कुछ देशों के साथ किए। जब बाहर जाते हैं तो ये बात आसानी से समझ आती है कि अगर ये जेलसी और कुछ अलग किस्म की, अजीब किस्म की राजनीति ना हो,
तो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको लोग पसंद करते हैं काम करने के लिए एज वर्कफोर्स. Indians are actually recognized and respected as workforce. And because they are professionally qualified, do not get engaged in bad behavior, do not deal with drugs and terrorism and do untoward activities. So people over a period of time who need manpower require Indians as their workforce. That's what I have understood in this period. So with many governments, we are working on migration and mobility agreement so that the things get more organized. Number two, whoever is out there, whether as a student or as a labor or as a information technology expert or as top class scientist, engineer, so on and so forth, I tell everyone that please register yourself with our embassy, because the more you register, the more database we have. It's easy for you to approach us, it's easy for us to approach you. And when we can approach each other, we can actually support each other. I mean, I'll be in a position to help you because I have a phone number, I know the address, I know he's a genuine person, and if any problem happens with employee, with law and order, with neighbors, with anything, our embassy can intervene in those matters. तो हम लोगों को आसानी होगी आप तक पहुंचने की, इसलिए embassy के साथ अपने आप को दर्ज करना ज़रूरी है. और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट हम बहुत सारे देशों के साथ कर रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं कि अगर आपको भारत के लोग चाहिए आपकी वर्कफोर्स में, आपको डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, फैक्ट्री वर्कर चाहिए, फार्मर्स चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए तो आप अग्रीमेंट कीजिए जिससे हमारे लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, आपके पास भी सही लोग पहुँचे, और जो इंटरमीडियरी गलत काम करके लोगों को अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और वो बेचारे लोग इतना भारी संख्या में अपना ज़मीन जायदाद गाड़ी मोटर बेच के विदेश में पैसा कमाने की आस के साथ जाते हैं. कई केसेस के अंदर, मतलब मैं आपको एक आध उदाहरण बताना चाहती हूँ, उनकी भी बर्बादी नहीं होगी. एक उदाहरण है, पहले की बात है जब मैं मंत्री नहीं थी, लेकिन कुछ हमारी 300-400 या 600 के आसपास नर्सेस को एक देश ले जाया गया. तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस केस को देखने के लिए क्वाइटली भेजा. वहाँ जाके जब हम पहुँचे तो पता चला कि एम्बेसडर जो है वो वही बात कर रहा है जो वहाँ की सरकार बात कर रही है कि ये इलीगल है, इनको वापस भेजो. वहाँ पे हमारे समाज के लोगों ने उन्हें अपने यहाँ रखा हुआ था और उनका खाना पीना रहना उन सब महिलाओं का हमारे समाज के लोग कर रहे थे. फिर जब उन लड़कियों से बात की कि भाई वापस जाने के लिए हम, क्योंकि उस समय, हाँ वो मैं बताना भूली, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इंटरनेशनल जो वेलफेयर फंड है, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए वेलफेयर फंड क्रिएट किया है भारत सरकार ने, पहले भी था लेकिन इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो पहले होता था कि वो पैसे नहीं है, वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस वेलफेयर फंड के माध्यम से टिकट प्रोवाइड करके उनको ऐसी कुछ गलत जगह फंस जाए जहाँ स्ट्रैंडेड हो, वापस आने का पैसा नहीं है, आप इलीगल हो गए हो, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो पासपोर्ट प्रोवाइड करके आपको वापस भेजा जाएगा. क्योंकि कई बार धोखे होते हैं, आम जन को पता भी नहीं होता कि मेरे साथ धोखा हुआ. ऐसा इस केस में ये लड़कियां लीगली गई थी और इनको जिस व्यक्ति के अस्पताल के लिए ले जाया गया था वो खुद वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री और एक बड़े पद पे व्यक्ति था, लेकिन बाद में वो एक रैकेट में फंस गया जिसकी वजह से इनको नौकरी नहीं मिल रही थी और सरकार के लिए वो इलीगल हो गई थी वहाँ पे पड़े पड़े. तो उनको हमने बोला कि इस फंड से हम आपको ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 25-25 लाख
10-10, 20-20 लाख का कर्जा लेकर आए हैं। घर वापस जाएंगे तो ये पैसा हम वापस नहीं कर पाएंगे और हमारे माता पिता के ऊपर बहुत बर्डन होगा। तो ये बात आके मैंने रिपोर्ट की कि भाई उनकी ये प्रॉब्लम है, तो किसी तरीके से उनको वही नौकरी चाहिए, एंड विच इज़ बियॉन्ड माई कॉल। मतलब वो काम मैं नहीं कर सकती, पर कोई करेगा ये काम। तो प्रधानमंत्री जी ने फिर सुषमा जी को भेजा, उस देश के मुखिया से बात की और उन महिलाओं को वापस अस्पताल में नौकरी मिली, ताकि वो वापस अपने घर पे जो कर्जा लेके पहुंचे उस पैसे को लौटा सके। तो ये बड़ी अजीब किस्म की ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं। सरकार वापस लाना चाहती है, उन्होंने कर्जा लिया हुआ है और ये लीगल केस था। इलीगल केस होता तो हम वापस ही होते वो लोग। तो अभी फंड क्रिएट करना, रीच आउट करना, कम्युनिटी का एक्टिवेट रहना, वहाँ पर अपने अधिकारों के लिए पुश करते रहना, इंश्योरेंस की बात करना, कोई गलत चीज़ हो जाए किसी की ज़िंदगी में, एक्सीडेंट्स कुछ भी, तो उनको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना। तो ऐसी तमाम चीज़ों पर भारत सरकार जो है अपने एम्बेसीज को जागरूक रखती है और साथ ही साथ ये काम होता रहे, अपने लोगों के बीच, डायस्पोरा के बीच भी बनी रहती है। और ईमेल आदि ये सब पोर्टल्स भी उनके खुले हैं और समस्या का समाधान के लिए शिकायतों के भी रास्ते बने हुए हैं। प्रवासी भारतीयों और प्रवासी गुजरातियों को अपनी जड़ों की तरफ और मजबूती से जोड़ने की जो कोशिशें चल रही थी, जिसमें यह भी था कि अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी रूट्स के बारे में और बेहतर अवेयर हों, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी किए जा रहे थे, सब किया जा रहा था। इसका कितना हार्टनिंग रिजल्ट आपको मिला है? वो मुझे अच्छा लगा जो सुनील जी ने पहले कहा कि कभी हमें ABCD कह के मजाक उड़ाया जाता है और कभी BBB कह के मजाक उड़ाया जाता है। सच है, क्योंकि जो जेलसी फैक्टर मैंने कहा था, समाज के अंदर कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स के प्रति एक जेलसी फैक्टर रहता है और उसका कारण है कि हमारे लोग ये marijuana और इन तरीके की चीज़ों में उलझते नहीं हैं। माता पिता कठिन परिश्रम के बाद जो पैसा होता है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, परवरिश पर खर्च करते हैं। और भारतीय बेसिकली एक इंटेलिजेंट कॉम है, मेहनती कॉम है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आदि में वो जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर उनको सुविधाएं मिलती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो सोशल लैडर में अपनी मेहनत के ज़रिए चढ़ जाते हैं। कई लोगों को तकलीफ होती है इस बात से और वो तकलीफ के कारण उनको थोड़ा अनदेखा किया जाता है। तो ABCD या BBB जो भारत में पैदा नहीं हुए हैं और विदेश में पैदा होने वाले लोग हैं, लेकिन भारतीय मूल के लोग हैं, कहीं ना कहीं मन में उनके भारत बसता है। और जब उनके मन में भारत बसता है तो भारत के प्रति एक स्नेह भी रहता है और उस स्नेह की वजह से वो बार बार अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। और क्योंकि सीधे रास्ते चलते हैं तो सही बात है कि बेहतर भी करते हैं। उनको अपने कल्चर से जोड़े रखना, मुझे लगता है कि एक माता पिता तो करते हैं अपने हिस्से का काम, लेकिन एक सरकार के तौर पे, एक मंत्रालय के तौर पे हमारा भी प्रयास रहता है कि हम सबके बीच बने रहें। तो जैसे बड़े बड़े उत्सव होते हैं, होली, दिवाली, गरबा, डांडिया, वो मैं उसको धर्म से नहीं जोड़कर संस्कृति के रूप में देखती हूँ। तो अगर वो संस्कृति का एक आचार व्यवहार रहता है, धर्म के इर्द गिर्द रहता है ताकि हम अधार्मिक ना बने, लेकिन वो संस्कृति का भी एक विषय है। तो सांस्कृतिक रूप से ये सब लोग कहीं ना कहीं उन ओकेजन्स पर मिलते हैं। कभी इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से कुछ कार्यक्रम का आयोजन होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। कल्चर मिनिस्ट्री कभी फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन करती है। अभी राष्ट्रपति जी गए थे नेदरलैंड्स, तो वहाँ पर रामायण का मंचन किया गया था। क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांसेस का मंचन होता है। अधिकतर जगहों पर हमारे कल्चरल सेंटर्स चलते हैं। उन कल्चरल सेंटर्स के अंदर विभिन्न प्रकार के उनको म्यूज़िक, योगा, आयुर्वेद, इस सब की क्लासेस चलती हैं वहाँ पे, ताकि वो जुड़े रहें,
अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ। फिर बहुत सारे भारतीय मूल के जो बच्चे हैं या वैसे सबके लिए हम लोग एक क्विज कंपटीशन खोलते हैं। तो जैसे इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव का हमने क्विज खोला, तो उसमें पार्टिसिपेट करके जो जीतते हैं, कई लेवल्स पे वो क्विज होता है, तो उनको भारत के कोई टूरिस्ट प्लेस या कहीं जाने का, भारत भ्रमण का, उस सब का भी मौका मिलता है। तो प्रयास रहता है कि सबसे जुड़े रहें और मतलब अगर मैं जा रही हूँ या अन्य भी कोई और जाते हैं, तो हम लोगों का रहता है कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत ज़रूर हो। कल्चरल परफॉर्मेंस में भारतीय परंपराओं की तरफ की कोई डांस, म्यूज़िक आदि कोई भी परफॉर्मेंस हो, और कई बार उसमें फॉरेन कंट्री का भी कंपोनेंट रहता है, वहाँ के भी लोग साथ जुड़े रहते हैं, ताकि हम स्टैंड आउट ना करें, हम मिक्स होकर अपनी आइडेंटिटी बनाए रखें। जैसे सेट्स होते हैं ना, सेट ए सेट बी मैथमेटिक्स के अंदर, मगर सेट ए सेट बी कभी ओवरलैप करता है, तो वो भी एक अपने आप में सेट सी तैयार हो जाता है। तो एक इंटरसेक्टिंग जोन, बट अपनी आइडेंटिटी अपने आप बनाए रखने का भी हम लोगों का काम रहता है। जैसे आपने कहा मैम कि हिंदुस्तान इज नोन फॉर बीइंग बेनेवलेंट एंड अ पॉजिटिव फोर्स। यूक्रेन रशिया के बीच में जो चल रहा है उसको लेकर हमने सुना, भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको पूरी दुनिया ने रेखांकित किया, दोहराया कि ये दौर युद्ध का नहीं। जब हम देखते हैं कि टर्की जैसे जो कंट्री हैं वो इंटरवीन करने की और जाके मध्यस्थता करने की पेशकश और कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान अपनी भूमिका क्या देखता है? इतनी ही देखता है या इसके बियॉन्ड भी देखता है जो हमने अभी तक किया है? देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ, वो है यमन और सऊदी अरब के बीच में घमासान छिड़ा हुआ था। वहाँ भी भारतीय फंसे हुए थे और उन भारतीयों को भी युद्ध विराम करवा के निकालने का काम भारत ने किया। शायद बहुत लोगों को उस विषय में मालूम नहीं है, तो मुझे लगा बताना बनता है। तो ये सब हम लोग करते रहते, क्योंकि इतने सारे भारतीय इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनको अपने मूल तक लाना ले जाने का भी हमारे पास रहता है। कौन से देश की क्या फॉरेन पॉलिसी है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने देश की जो पॉलिसी है उसमें है कि जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना नजर झुका के, ना नजर उठा के, नजर मिला के बात करो। तो वही बात हमारी फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देती है कि ना नजर झुका के, कोई चाहे कि हमें झुका के कुछ करवा लेगा तो वो भी संभव नहीं है। नजर उठा के हम किसी की तरफ देख के कुछ करें, वो भी हम नहीं करते, क्योंकि हमारा व्यवहार वैसा नहीं है। नजर मिला के आपस में मित्रता के भाव से जो चीजें संभव है वो हम करने को राजी हैं, और कई बार करते भी हैं। हर चीज टीवी कैमरा के लिए भी नहीं होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मध्यस्थता हम अपने आप अज्यूम नहीं करते। मध्यस्थता के लिए दोनों साइड का राजी होना, जो ताकतें भिड़ाने में लगे हुए हैं उनका साइड स्टेप करना, और हमारे से ये उम्मीद होना कि हम ये करेंगे, तब हम करेंगे, नहीं तो हम डिस्टेंस ही मेंटेन करेंगे। नजर मिला के अभी भी यूक्रेन को भी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है वो भारत ने दी है, लेकिन अगर मेरे देश की ज़रूरत है, उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि भारत के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे रहे या ज़रूरत रही हमारी, हम खाड़ी के देशों से अपना तेल खरीदते थे। खाड़ी के देशों हमें नज़दीक पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन खाड़ी के देशों से बढ़े हुए दाम पर अगर यूरोप के देश खरीदेंगे और करेंसी क्राइसिस ऊपर से और होगा, साथ में ईरान के ऊपर सैंक्शन होगी, ईरान से आप नहीं खरीद सकते, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन की आप वहां से नहीं खरीद सकते। तो भाई 1.3 बिलियन का देश जहां पे 3% के हिसाब से एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, क्या करेगा? हम रशिया से तेल खरीदते हैं,
क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। उसमें हमें कोई आंख दिखाए या उम्मीद करे कि हम आंख झुकाएं, वो संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को और हर एक देश को अपने देश की चिंता करनी है। तो हम अपने देश की, भारत की चिंता के लिए और भारत की भलाई के लिए जो कुछ होगा वो करेंगे। तो इसी में मैम ये भी जानना चाहता हूँ मैं कि अब G20 है आगे और वहाँ पर प्राइस कैपिंग भी एक बड़ा मुद्दा होगा, ऑयल प्राइस कैपिंग। तो इसको लेके हिंदुस्तान कैसे देख रहा है? और क्योंकि वहाँ पे मिस्टर बाइडेन भी होंगे, मिस्टर जेलेंस्की भी होंगे, मिस्टर पुतिन भी होंगे, तो क्या उस मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हिंदुस्तान देखता है? एब्सोल्युटली। हमारा तो पहले दिन से, और ये एक नहीं, लगातार देश के हर व्यक्ति ने ये बात कही है और प्रधानमंत्री जी ने तो खास तौर पे ये बात कही है कि डिप्लोमेसी इज द वे फॉरवर्ड। हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो लोग टेबल पे बैठे आपस में बातचीत करें, हम उसके पक्ष में हैं। और वो टेबल हमारी हो या कोई और टेबल हो, उसकी हमें चिंता नहीं है जी। टेबल होनी चाहिए और जो विरोधाभास है वो सुलझना चाहिए। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सबको उसमें अपनी सोच समझ और द राइट वर्ड इज विजडम, विजडम के हिसाब से आपको ये काम करना होगा। एंड आई ऑलवेज से सद्बुद्धि दे ईश्वर सबको, लेट विजडम प्रिवेल so that people know how to conduct their business and no unfortunate incidents should happen, and people should not become so selfish that they only think about themselves and forget the poorer nations of the world, because poorer nations which have higher density also need support, and we cannot, the rich nations cannot choose a policy which is creating havoc to the rest of the world, as if Africa doesn't exist, as if they don't need energy, as if people in Asia do not exist, they don't have a problem. And I constantly maintain this, ऐसे कि भाई आप मुझे एक बहुत साधारण तरीके से एक बात बताइए, रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है वो आप सब के जानते हैं। अफगानिस्तान नक्शे से गायब हो गया है क्या? या जो कुछ हमारे बॉर्डर पे चल रहा था कुछ समय पहले तक, उसके बारे में क्यों बातचीत नहीं थी? तो ये जो आपने नाम लिए थे कुछ देशों के पहले, उसके संदर्भ में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो लगता है, जो दिखता है, ज़रूरी नहीं वो होता है। कई बार इंटरलिंकेजेस इतनी घनिष्ठ होती हैं कि उसको तोड़ पाना या उससे निकल पाना संभव नहीं होता। और कई बार नूरा कुश्ती चलती है, ये भी राजनीति का हिस्सा है। मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड यहाँ बैठे हैं, वो जानते होंगे कई बार नूरा कुश्ती भी करते हैं। तो वो देश में, देश के बाहर भी ऐसा होता है। तो ये खास तौर से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मीनाक्षी लेखी जी भी उन लोगों में रहीं जो बहुत मुखर रूप से ये कहती रहीं कि क्या होता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट हिंदुस्तान के रुपए का हाल, तब जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज जहां पर पहुंचा हुआ है रुपया। हालांकि वर्ल्ड ओवर करेंसीज की हालत हम देखते हैं डगमगाई हुई है, लेकिन उससे जोड़कर देखा जाता है कि तब बहुत मुखर आलोचना हुई थी। आज वो लोग क्या सोचते हैं जब सत्तारूढ़? आप परसेंटेज निकालिए। अब ये इकोनॉमिक्स का गेम जो है वो साधारण भाषा में या दो लाइन में समझाना कठिन है। उसके लिए आप एक अलग सेशन करेंगे और मैं आके बैठूंगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में आपको समझना होगा वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन क्या चल रही है। आपको समझना होगा कि किस तरीके से कुछ करेंसीज को छापा गया है। आपको समझना होगा कि करेंसी को किस तरीके से अभी कुछ देश जो हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ट्रांजैक्शंस में गोल्ड ट्रांजैक्शन का क्या रेट चल रहा है, हमारे आसपास किस तरीके से जो इन्फ्लेशन वर्सेस करेंसी का क्या हुआ है, ऑयल एक बड़ी चीज़ है उसकी रेट्स पे क्या हुआ है, कोविड का क्या हुआ, साथ में कोविड के साथ साथ वॉर
जो कि 10% दुनिया का तेल यूरोप में, मतलब 10% दुनिया का तेल रशिया निकालता है। अगर आप ये कह दें कि 10% तेल नहीं खरीदा जाएगा, उसका क्या असर होने वाला है पूरी इकोनॉमी के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर। और फिर तेल निकालने की कैपेसिटी होती है अलग अलग देश की, फिर रेट्स के ऊपर क्या अंतर आएगा। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। पहले की जब मैंने बात किया, मैंने उस पर लिखा भी है। उस समय मैंने लिखा है कि जब मलेशिया छोड़ दीजिए, इंडोनेशिया, जो हमारे आसपास के, वियतनाम, जो हमारे आसपास के देश हैं, या हमारे जैसे और अन्य देश हैं, ब्राज़ील वगैरह, जब उनकी करेंसी और इन्फ्लेशन के अंदर 8 से 10% का अंतर पड़ रहा था, तो भारत की करेंसी का 32 और 40%, 38% अंतर पड़ रहा था। कंपैरिजन जो है वो परसेंटेज टर्म्स में और बाकी सब चीज़ों के साथ मिलाकर होता है। तो मैं इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ज्ञान आज इतना ही रखना चाहती हूँ, कभी और बैठ के इस पर बात करूँगी। और इस पर मैंने लिखा है पुराने समय में। क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी देख रही हैं और ये हमारे सब संस्कृति के वाहक यहाँ बैठे हुए हैं। कल्चर, हिंदुस्तान का ये सॉफ्ट पावर, और आने वाले दिनों में इसको लेकर नए होराइजन्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये आपने जिक्र किया है कि हमारा वो किस तरीके से सब सेट बनता है, सेट ए सेट बी मिलके सेट सी बनाते हैं। लेकिन क्या ये, क्योंकि आप जब ये कहती हैं कि हमारे रूट्स और हमारी परंपरा ही हमारी ताकत रही है, इसीलिए हम इतनी पुरानी संस्कृति हैं, तो क्या ये सेंटर स्टेज में आके ये बात दुनिया को राह दिखाने वाली हो सकती है? क्या इस सॉफ्ट पावर को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है? मुझे लगता है कि सॉफ्ट पावर हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और सॉफ्ट पावर जो है दूसरों तक रीच आउट करने का एक बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये बात ब्यूरोक्रेसी को समझाना कठिन होता है। वो इतने पक्के ढले हुए लोग हैं कि या तो वो खंडित ही होंगे, सीरियसली, मैं ये बात बड़ी मुझे पता नहीं यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट भी बैठे हैं क्या? नहीं, मैं उनको सुनाने के लिए ही कह रही हूँ। मतलब नहीं देख रहे तो देखें बैठ के कि आपकी मंत्री आपके बारे में क्या सोचती हैं। उनको समझाना इतना कठिन काम है कि हर बात का जवाब ना नहीं होता, हाँ होता है। देखिए, ये जनता जानती है। मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण बता रही हूँ कि जैसे और सभी ऐसा भी नहीं है, कुछ को समझ भी है। वो कल्चर को एकदम ना, मतलब कि मैंने आज़ादी का अमृत महोत्सव में कार्यक्रम किया, 5000 कार्यक्रम हुए, ख़त्म। और वो किस स्केल का कार्यक्रम हो रहा है, क्या आप मैसेज दे रहे हैं, कितना आपने दूसरे देश पे छाप छोड़ी, उसका कोई कॉल बैक, उसका कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं होता। तो भाई ऊपर से आदेश आया कि आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम करना है। जो हमारे ICCR के स्कॉलर्स उस देश में कुछ पहले सीख के गए हैं, बुलाया, परफॉर्म किया, चाय पी, और क्या कहना चाहिए, यूजुअल सस्पेक्ट्स, एम्बेसी के पास एक सर्टेन लिस्ट होती है, उन्हीं लोग को बुलाया, उन्हीं को चाय पिलाई, काम खत्म। तो काम खत्म टिक मार्क करने वाली व्यवस्था बन गई है। जो व्यवस्था में आप मंत्रालयों से बात करें, उन दूसरी साइड के कोई आइकॉनिक प्लेस के ऊपर आप कार्यक्रम करें, और उस आइकॉनिक प्लेस पे आम जन का पार्टिसिपेशन हो, बड़ा कार्यक्रम हो, वहाँ पे जो एस्टैब्लिश चीज़ें हैं उनके साथ काम हो, वहाँ पे मुझे थोड़ी सी लेथार्जी दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि भारत की जो परंपराएं हैं वो इतनी पॉजिटिव है, जिसको अनदेखा करना अपने से गुनाह करने वाली बात है। और अभी हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक 2014 से प्रोजेक्ट मौसम करके पेंडिंग था। आप सोचिए 2014 से 2000 क्या चल रहा है अभी, कितने साल, 8 साल, 2022 तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। आके थोड़ा मैंने उसको हिलाना डुलाना शुरू किया। मैंने कहा भाई
ये हमारा पूरा का पूरा, अगर आप भारत का नक्शा देखें तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ये तमाम और जो खाड़ी के देश हैं वो सब हम लोग कनेक्टेड थे। और हम लोग कनेक्टेड थे थ्रू मॉनसून विंड्स। ये कहना कि हमें ग्रीक्स ने आके मॉनसून के बारे में बताया, आप में से कितने लोग ये मानने को तैयार हैं कि मॉनसून होती है, मॉनसून का इस्तेमाल होना चाहिए, वो ग्रीक्स ने भारतीयों को सिखाया? कोई मानता है ये बात? आप लोग नहीं मानते, लेकिन ऐसा प्रचलन है। और मैं इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई स्टीम इंजन बनने से पहले भारत जो ये पारंपरिक रूप से जहाज बनाने की व्यवस्था थी हमारी बहुत स्ट्रांग थी। हम शिपीज थे, हम जहाजी थे, और वो जहाज बनाने की हमारी परंपरा इंडस्ट्री के रूप में इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो सारे गुजराती जाके इंडोनेशिया कैसे बैठते जी, बाली कैसे पहुंच जाते? आज भी उनकी भाषा में मेज, दरवाजा, ये सब कैसे आता? क्योंकि हमारी परंपरा स्ट्रांग थी और मॉनसून विंड्स के जरिए हम लोग ट्रैवल करते थे। तो मॉनसून अगर आउटवर्डली है तो वो रूट लेते थे, इनवर्डली है तो वो रूट लेते थे। तो वो प्रोजेक्ट अब दोबारा से शुरू करने का प्रयास है, क्योंकि जब लोग गए तो साथ में पूजा पद्धति, साड़ी, प्रिंटिंग के तरीके, इक्कत, सब कुछ लेके गए, और उसी की वजह से वहाँ पे वो परंपराएं स्थापित हुई। और वापस ज़रूरी है टैंजिबल इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर भारत की इंटैंजिबल टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को स्थापित करना, और उस हेरिटेज के माध्यम से भारत के चारों तरफ ग्लोबल संपर्कों को इंगित करना, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला और आकर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। हमारे प्रवासी भारतीयों, प्रवासी गुजराती भारतीयों के लिए ये सेशन निश्चित रूप से बड़ा एनलाइटनिंग रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वेरी मच। जय हिंद। થેન્ક યુ મીનાક્ષીજી, થેન્ક યુ દિનેશ. આજે અહીંયા એક એવો સમન્વય થયો છે કે જેના આપણે સૌ સાક્ષી બન્યા છીએ. એક એવો સમન્વય કે જેમાં ગુજરાતની વાત થઈ રહી છે, ગુજરાતીઓની વાત થઈ રહી છે, સાથે દેશમાં સંસ્કૃતિને લઈને આગામી દિવસોમાં શું કામ થવાના છે તેની પણ આજે ચિંતા આ મહામંચ પરથી થઈ રહી છે. ત્યારે મીનાક્ષીજીએ પણ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા, અને ન માત્ર એક પોલિટિકલ પર્સનાલિટી તરીકે પણ એક સંવેદનશીલ વ્યક્તિત્વ તરીકે પણ તેઓએ દેશની ચિંતા કરી, દેશની દીકરીઓની ચિંતા કરી, ગુજરાતની ચિંતા કરી. મીનાક્ષીજીનો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે હું જેને મંચ પર ઇન્વાઇટ કરવા જઈ રહી છું તે દેશની પહેલી એવી મહિલા છે કે જેમને ગ્રેમી એવોર્ડનું સન્માન મળ્યું છે. હું ઇન્વાઇટ કરીશ તન્વી શાહને, અને સાથે જ TV9 ગુજરાતીના ચેનલ હેડ કલ્પક કેકરેને પણ ઇન્વાઇટ કરીશ સ્ટેજ ઉપર કે જેઓ તેમનું સન્માન કરે, તેમનું સ્વાગત કરે. તન્વી શાહ. તન્વી શાહ કે જે અલગ અલગ ભાષાઓમાં ગીત ગાય છે, અને સાથે જ ગુજરાતનું ગૌરવ છે, દેશનું ગૌરવ છે, જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ સાથે પણ તન્વી શાહ સંકળાયેલા છે. અને ગ્રેમી એવોર્ડ જેવો સન્માનનીય પુરસ્કાર તેમને પ્રાપ્ત થયો છે, અને TV9 પણ તમારું સ્વાગત કરે છે, તમને સન્માન કરે છે. તાળીઓથી એમને વધાવી લો.
અને અને હવે હું આ સેશનના મોડરેટર નીરુને પણ ઇન્વાઇટ કરીશ મંચ પર કે જે તન્વી સાથે સંવાદ કરશે અને તન્વી પણ તેમના ભાવિ વિશે, તેમને ગ્રેમી એવોર્ડ મેળવીને કેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, એક મહિલા તરીકે તેમના શું વિચારો છે તે વિશે પણ વાત કરશે. નમસ્કાર, હું નીરુ આજે જોડાઈ ગઈ છું તમારી સાથે TV9ના ભવ્ય મંચ પર, અને મારી સાથે હાજર છે એક એવી હસ્તી જેના વિશે આપ સૌ કોઈ જાણો છો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને ખૂબ જ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ. એક ખૂબ જ સારી મને લાઈન યાદ આવે છે તન્વી શાહને જોતા. નારી તું શક્તિ છે, સન્માન છે. નારી તું ગૌરવ છે, અભિમાન છે. નારી શક્તિને શત શત પ્રણામ છે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તન્વી તમારું TV9ના ભવ્ય સ્ટેજ પર. થેન્ક યુ સો મચ. પ્રવાસી ગુજરાતી પર્વના ભાગરૂપે તમે અમારી સાથે આ મંચ પર જોડાયા છો. પહેલા ઇન્ડિયન વુમેન છે તન્વી શાહ, જેને ગ્રામી એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા છે. આ એક પોતામાં ખૂબ જ મોટી અચીવમેન્ટ છે. તો સૌ પ્રથમ તન્વી તમે જણાવો, જ્યારે તમે ગ્રામી એવોર્ડ લેવા સ્ટેજ પર ગયા હતા એ જે અનુભવ છે કેવો રહ્યો? કારણ કે જે તમારું લુક હતું ઇન્ડિયન અટાયરમાં, એક ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ પર તમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, પણ તમારું જે લુક હતું એ ભારતીય સંસ્કૃતિથી જોડાયેલું હતું, એના રૂટ્સથી જોડાયેલું હતું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધન્યવાદ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી ઓન સ્ટેજ. ગ્રામીની વાત કરીએ તો આઈ થિંક it was a very big platform, and for me it was a very overwhelming feeling, કેમકે I was not only representing Nari of my country, I was representing a Gujarati side. I was also representing being Indian. અને ત્યારે બી એમ એ વિચારમાં નહોતા ગયા કે હા જીતી જીતશું, it's going to be fine. નહીં જીતશું તો also it's going to be fine. Participation is more important. Participation, and at least અમે એ લેવલ પર ગયા. અને as a woman, out of all the Indian women ever, મને એ blessings મળ્યા. It was very overwhelming, and I feel very grateful. Now coming back to એ દિવસે મને કે એ વીકમાં ઘણા ડિઝાઇનર્સને એ લોકોએ હું સજેસ્ટ કર્યું આ ગાઉન પહેરો, ઓ ગાઉન પહેરો, ને પણ મનમાં એમ વિચારી લીધું કે ના, ઇન્ડિયન આઉટફિટમાં જ જવાનું છે. પણ બિકોઝ ઓફ ધેટ આઈ ઓલ્સો everyone appreciated it. They appreciated the fact that I was wearing and I was representing my culture. એટલે I think it was a good thought of mine, and I think I was right to go and show Indian culture at the world stage. So yeah, Nari Shakti. સો નારી શક્તિની સાથે સાથે તન્વી ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ પર પણ ઘણા અચીવમેન્ટ્સ રહ્યા છે તન્વીના. મલ્ટી ટેલેન્ટેડ છે, મલ્ટીલિંગ્વલ છે, ડિઝાઇનર, મ્યુઝિશિયન, સ્પિરિચ્યુઅલ પણ છે ખૂબ જ તન્વી. તો તન્વી, આજે અમને આ તક મળી છે તમારી સાથે આટલી બધી વાતો કરવાની. સમયનો અભાવ તો છે જ, પણ ફટાફટ અમને એક ટૂર કરાવી દો, તમારી ડેલી લાઈફસ્ટાઈલ, તમારું રૂટીન કેવું હોય છે, કારણ કે આટલા બધા રોલ્સના વચ્ચે જગલ કરવું ઇટ્સ નોટ ઇઝી. મલ્ટીલિંગ્વલ તમે બોલ્યા છે, બટ ઓનલી ગાવામાં. આઈ કાન્ટ સ્પીક. પણ છો રાઈટ? હા, ગાઓ છો. સો ઇટ ઇઝ. યસ. અને એ પણ 18 ભાષાઓમાં. એમ આઈ રાઈટ? ટચિંગ 18. Yes. So it's a big thing. Yeah, in a way, yes. So how do you juggle between all the roles?
I think the most important thing that I have been following is I follow this one principle કે આપણામાં diligence હોય, determination, dedication અને most of all punctuality. આ ચાર ચીજ હોય તો લાઈફમાં આપણે કોઈ તમને ટસથી મસ ન કરી શકે. You'll always make it. And બધાના ભૂક્કા કાઢી નાખે આપણી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ. પણ I think also the fact that એ discipline છે, like તમે કહેતા હતા કે મારું રૂટીન શું છે. My day starts દિવસના સવારે 3:45 ઉઠી યોગા કરી, then by 6 o'clock I finish everything, meditation, yoga, etc. 6 o'clock I belong to the world. 3 થી 6 is my time, and I really look into myself and do what my thinking કે કાંઈ લખાણ કરવાનું હોય. So I do that, and then થોડુંક ગાવાનું પ્રેક્ટિસ થાય. પછી તો usual office, as you said, the design part of it comes into play. પછી એ 3 વાગ્યા સુધી એ ચાલે. કોઈક વાર રેકોર્ડિંગ્સ આવી જાય તો એમાં ચાલી જાઉં. નહીં તો between 3 and 7 સ્ટુડન્ટ્સ આવે શીખવા. So I'm learning from my students and I'm giving them knowledge. So barter system, I can't complain. પછી રાતનો 10 10:30 out. સો આજે તમે 3:45 ઉઠો છો, 3:45 વાગ્યા, તમારું ડેલી રૂટીન છે? Daily. વાવ. You sound shocked. ઓફકોર્સ, કારણ કે આટલા બધા રોલ્સ હોય તો નોર્મલી આટલું બધું ડેડિકેશન, ડિલિજન્સ જે તમે કીધું એ તમામ તમારા જે પ્રિન્સિપલ્સ ઉપર તમે ચાલો છો એ ખૂબ જ મહત્ત્વનો રોલ ભજવે છે. Also I would like to say that એ જે નવું કંઈક શીખવાનું જે છે, I have that. Yes. I always feel કે કંઈક નવું આજે શીખવાનું છે. Every day is a new day and you have to learn something new. I think if you have that and that makes you happy, you be happy, you're sorted. So even after achieving so much, you still feel that you have a long way to go, a lot to do, and every day is a learning experience. Yes. So AR રહેમાન સાથેની જે તમારી સફર છે એ વિશે અમે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ, પણ અત્યાર સુધીની આ તમામ જે તમારી પૂરી જર્ની રહી છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, કેટલા પડકારો તમારી સામે આવ્યા છે અને કઈ રીતે તમે આ તમામ સિચ્યુએશન હેન્ડલ કરી છે? કારણ કે એક લોકલ લેવલથી નેશનલ લેવલ, ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ પર એક પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી એ ઓફકોર્સ પડકારો ભરી તમારી જર્ની રહી હશે. એ તો છે જ. યુ કે નોટ, લાઈફમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ તો આવે જ, બટ આઈ થિંક યુ હેવ ટુ ટેક ઇટ ઇન સ્ટ્રાઇડ. You really have to just take it in stride and believe in the Almighty. એક દેવી કે જે હોય મનમાં હોય, she'll take care of it. And that's my message to the universe. Today you're going to take care of me. તમે સંભાળજો આ તમારા ઉપર. એટલે I can't complain. પણ difficulties છે, I've faced it. But તમે આજે પડી જાઓ તો you have to get up, na? What keeps you going? What keeps me going? કોઈ તમારી એવું, તમારું કોઈ એવું આઈડલ કે તમારી એવી કોઈ વિચારધારા જે તમારી સામે પડકારો આવે તો પણ તમને પડવા ન દે? As I said, you know, તમે યુનિવર્સને ઈ સંભાળશે, ઉપરવાળો સંભાળશે, પણ સંભાળશે. ઈ બિલીફ, તમારી સ્પિરિચ્યુઆલિટી આવે છે. The confidence that I have in him, that ના એ સંભાળી લેશે, કાંઈ બી થશે સંભાળી લેશે. એન્ડ આઈ થિંક ફ્રોમ ધી ઇનસાઇડ આપણે છે ને ખુશીથી બધું કરવું જોઈએ. નેગેટિવ એનર્જીથી હું કાંઈક સ્ટાર્ટ કરીશ તો કેવી રીતે? ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ મૂવ ફોરવર્ડ. સો યુ હેવ ટુ થિંક પોઝિટિવ. દેટ્સ ધી ઓનલી થિંગ, એન્ડ યુ હેવ ટુ ટેક ઇટ ઇન યોર સ્ટ્રાઇડ. તો આપણે કહી શકીએ તન્વી શાહની જય હો. જય હો. તો થઈ જાય એક વખત જય હો. હે આજા આજા जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले. जय हो शब्बे गम, जय हो गमे दिल, जय हो
हाले दिल जय हो बेखुदी. તન્વિશા જય હો. Thank you, thank you. દેટ વોઝ સુપર્બ, વન્ડરફુલ. અને આ ગીત એવું છે ને કે જેટલી વખત સાંભળીએ ને વધારે સાંભળવાનું મન થાય. રાઇટિંગ પાર્ટ, સિંગિંગ પાર્ટ, બધા જે અલગ અલગ આસ્પેક્ટ્સ છે તમારા મ્યુઝિકના, એ તમે કઈ રીતે માસ્ટરી કરી છે એમાં? I wouldn't say mastery, but ઇટ્સ અ બિગ અચીવમેન્ટ ઇન yes, ઇટસેલ્ફ. yes. You have to practice. Practice makes you perfect. Practice no karo to kevi te agar. So it all boils down to that. It's the same simple discipline. Discipline લાયાવું જ પડે છે. પહેલાં નહોતો, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, નહોતું. હવે ધીરે ધીરે ખબર પડે છે કે ના, પ્રેક્ટિસ કરો તો આગળ વધશો. એટલે તમે જે રીતે કહ્યું 18 લગભગ 18 અલગ અલગ ભાષાઓમાં તમે ગાઓ છો. અરાબિકમાં કંઈ થઈ જાય? ઓકે, આ અલ્જીરિયન અરેબિક છે, નોટ ઇજિપ્શિયન અરેબિક. ઓકે. يمراني ما غدو وتاني متمني يكتب ومجتو ونخون هداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني مقال تبقى أرياح الهب هو عندك هتوني وداني وصاني وكلي حبيبك ما تنساه زينة ما درتي فينا أنا وقلبي هوسني عليك ملكينا يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي هوسني عليك ملكينا. વાવ, દેટ્સ વન્ડરફુલ. ઓલ્ધો લિરિક્સ તો નથી સમજાણા, બટ જે સુર અને જે અવાજનો જાદુ છે એ ડેફિનેટલી તમારા તમામ જે લિસનર્સ છે એ લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દે એવું છે. આઈ મસ્ટ સે દેટ. શું સ્ટોરી છે આ સોંગની? સો એ બેસિકલી ઇટ્સ અબાઉટ આ એક છોકરી છે ઝીના, એ કે એના જેમ એના લવરને બોલાવે છે, એનો આપણે કહીએ ને એનો સાહેબાને બોલાવે છે. ઇટ્સ બેસિકલી દેટ. તું ક્યારે આવીશ, પાછો ક્યારે આવીશ. દેટ્સ લવલી. તો ખાસ કરીને તમે સમાજમાંથી આટલું બધું તમને પ્રેમ, માન, સન્માન મળ્યું છે. યુ બિલીવ ઇન ગિવિંગ બેક ટુ ધ સોસાયટી. એના માટે પણ તમે કેન્સર પેશન્ટ્સ માટે કામ કરો છો, પોલિયો માટે. સો એમાં કઈ રીતે તમે કામ કરી રહ્યા છો હાલ? we are doing a lot of fundraising ને બધું કરીએ છીએ, અને a lot of working with a lot of patients ને બધું. એટલે એ તો ચાલ્યા જ કરે છે, અને giving back to society is part of my profession. આજે આટલો બધો પ્યાર મને મળ્યો છે, so it's better to help the other way round. અને એ પણ તમે ડોનેશન મ્યુઝિકના ફોર્મમાં આપેલી છે, જિંદગી સોંગના for ફોર્મમાં. the end of polio campaign. સો એ કોન્સેપ્ટ કઈ રીતે આવ્યો તમને? That's my job, that's my passion. એટલે that's the best way to give back. TV9ના આજના મંચ પર આવીને ગુજરાતી બનીને તમને એક શું તમે મેસેજ દેવા માંગો છો તમામ લોકોને, ગુજરાતીઓને, ખાસ કરીને નારીને? Dream on, don't ever stop dreaming, પણ focus રહેવું જોઈએ. And as I said, diligence, discipline, dedication and punctuality, very important. જે આપણને એનર્જી આપે છે, શક્તિનું જે રૂપ છે માં અંબે, જગદંબે, એનું એક ગીત થઈ જાય. આપણે હાલ નવરાત્રિ હતી. મોતી વેરાણા ચોકમાં આવ્યા અંબેમાં, ચોકમાં જગમગ થાય રે આવ્યા અંબેમાં. આ એક એવું સોંગ છે ને કે જેના ઉપર આપણે બસ થિરકવાનું શરૂ થઈ જ જાય. બટ તન્વી, તમારી સાથે વાત કરીને બહુ જ મજા પડી ગઈ, અને તમામ લોકોને પણ ખૂબ જ આનંદ થયો કે તમે આ ઇવેન્ટના અમારી સાથે ભાગ બન્યા છો. થેન્ક્સ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. Thank you so much. Thank you so much. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ તન્વી, થેન્ક યુ નીરુ. અને હવે આપણે લંચ માટે આગળ જઈશું, અને એક જ કલાકમાં આપણે ફરીથી સેશનની શરૂઆત કરીશું. ઘણા બધા મુદ્દાઓને આજે ચર્ચા કરવાની છે, સંવાદ કરવાનો છે.
એટલે થોડી જ વારમાં પાછા મળીએ છીએ નવા સેશન સાથે, નવા મહાનુભાવો સાથે. થેન્ક યુ.